It's 7 a.m. and it's webinar day. मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि इनका सब्जेक्ट लेके बाहर चर्चा करती है कि फिटनेस स्ट्रिक्ट है लेकिन कूल गाय। शाहरुख खान को किस तरीके से देखते हैं, वैसे मेरी फ्रेंड्स उनको देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना स्पेशल फील होता होगा। I was still under this dilemma कि ये होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, but he was very confident. He said no, I know what you are capable and I know what you can do, so you just trust me and do what I'm asking you to do. I have crossed students all over 200. So this is I'm talking purely about Graphon Numero. Astro Numero is again different. इसका counting अलग. When it all goes down. This is like 13, 14 months. I have already crossed about 10 lakh. It's really amazing the kind of things you can know about a person just by looking at his handwriting and his signature. My husband didn't support me, but जब आपने वो वाला बताया उसके बाद से मतलब 5 days हो गए हैं, लेकिन उनको इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, and he was so happy. वो मुझे खुद कहते हैं कि तेरा क्लास कब स्टार्ट होगा. And the way Sudhir sir teaches, it's really conceptual and logical. Because I told them that I've only done it in 4 days, so if it's wrong, just tell me it's wrong. And not even one was wrong, sir. Not even one. Amazing, amazing, sir. It was a very, very big eye opener that even a writing can depict so much about a person. Ladies and a huge round of applause to the one and only world's first scientific logo designer, the most iconic person in the history of occult science. Put your hands together for the one and only Sudhir Kowe. Good evening, all of you, and welcome to day one of handwriting and signature masterclass. Now, before we go forward, how many of you are listening to me for the first time? How many of first timers? Not seen any of my video, not have seen anything else. So I see so many people. Wow, amazing. Okay, great. So can I know your city name? From which city are you all? How many of you from Mumbai? So Sanjay is from Mumbai, Shilpa Hyderabad, Pooja from Mumbai, Akshay from Mumbai, Sangeeta Chandigarh, Vienna, Delhi. Oh God, such a high speed reply. I'm not able to read anything. Angelika from where? Which city? German from Gurgaon, Vishal from Gurgaon, Arti from Mumbai, Vicky from Bangalore, Kusum from Odisha. So anyone from Chennai by any chance? So Venkat Raman is from Chennai. Anyone from maybe Kolkata? Anyone from Kolkata? So CR is from Pune, Priyanka is from Chennai. Currently in Dubai, Ricky is from Dubai. Okay, Manjush is from Delhi again. Great. No one from Kolkata? Okay, yeah, Dina Rana is from Kolkata. Awesome. So we all got
Anyone from Surat or Ahmedabad? So you need to check your audio. Anyone from? Okay, so Raghu is from Baroda. So we have covered almost all the India. So my name is Sudhir Koe and I'm a graphologist. How many of you heard this term called as graphology before? Graphology. Have you heard about this? Graphology, yeah. Girish says yes. What about this? Yeah. Preeti says no. Okay. So for those who are not aware about what is graphology, graphology is a science of understanding human subconscious mind through handwriting. It means that you can read the human mind from the handwriting. मतलब आपकी लिखावट से ये पता चलेगा कि आपकी सोच कैसी है. ये होता है ग्राफोलॉजी. Now, why it should work? Why it should work the graph? Okay, graphology बात कर रहा है कि आपका human subconscious mind can be read. So, how many of you think from the mind? आप में से कितने लोग जो है वो ब्रेन से, जो how many of you are thinking from your brain? ब्रेन से सोचने वाले कितने लोग हैं? Brain, just type B if you think from a brain. How many of you are thinking from brain? Okay, just type B. Jyoti, type B. Yogita says B. Priyanka says B. Okay, so many people are thinking from brain. Interesting. Okay. Okay. So those who don't understand Hindi, we also have a pure English recording. So in case you miss, we have an English recording which you can avail. Okay. So don't worry. If you don't understand, we have a recording for that as well. So many people are thinking from brain. Awesome. Very nice. How many of you are thinking from the mind? Just type M. If you believe that you think from mind, type M. Now, all those people who are confused, mind and brain, are they not two same thing? Are they different things? Okay. Type C if you are confused about mind and brain. So Manjush is confused. Priyanka is confused. Pooja is also confused. What is the difference? So mind is the software and brain is the hardware. So mind thinks. Mind thinks. How many of you believe that your body has a mind? How many of you believe that your body has a mind? क्या लगता है आपको लगता है कि आपके बॉडी के पास माइंड है? How many of you are with here right now with the mind? So okay, a lot of people are there who believe that body has a mind. Okay, how many of you believe that your mind has a body? Type MB if you believe that your mind has a body. So your body doesn't have the mind at all. बॉडी के पास मन नहीं है, इसलिए जब आप बॉडी को कट करोगे, अभी मत ट्राई करो, ठीक है? लेकिन अगर आप बॉडी को कट करोगे तो उसमें आपको माइंड नहीं मिलेगा, बिकॉज बॉडी इज नॉट इनसाइड द माइंड, बॉडी इज आउटसाइड द माइंड. Your mind is outside your body. That is why you can travel with your mind so many kilometers, distance, time. Nothing matters to your mind. It can travel at a very large speed. It can go to past, present and future because it is of non-physical in nature. तो माइंड जो है वो फिजिकल नेचर का नहीं है, माइंड जो है वो नॉन फिजिकल नेचर का है. इसीलिए बॉडी के पास माइंड नहीं, लेकिन माइंड के पास बॉडी है. तो जब ये माइंड, इसलिए देखो आप किसी को देखते हो तो आपको बात करने की इच्छा होती है, कभी कभी बात करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशंस है उससे आपको पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, मैंने इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माइंड से माइंड का इंटरेक्शन हो गया है इवन बिफोर यू वांटेड टू स्पीक. अब ये जो माइंड है ये सिग्नल देता है आपके ब्रेन को. माइंड गिव्स सिग्नल टू द ब्रेन एंड ब्रेन देन जनरेट्स द इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नल व्हिच ट्रैवल्स फ्रॉम योर हैंड to your fingers, and your finger move on the paper and they form dot, line, loop and curve. These things are called as the graphs, and when you analyze these graphs it is called as the graphology. Dot, line, loop and curve. So writing is
psycho neuromuscular activity. It means whenever you are writing, whenever you want to write, the writing happens at 3 different levels. First, the thought comes to your mind, that is a psycho. Then it goes to the brain. Neuro and muscular means body. That is why whenever you write, writing is a commitment at 3 different levels. जैसे ही आप लिखना चाहते हो, लिखने के वक्त 3 अलग अलग लेवल पे आपकी कमिटमेंट होती है. इसीलिए जब आप किसी दुकानदार को कहते हो कि तूने जो अभी जितना भी बोला है ये लिख के दे दे, तो कहता है कि भाभी जी रुक जाओ, मुझको सोचने दो, हाँ कल नहीं मिलेगा भाभी जी, परसों मिलेगा. तो ये जो परसों का कमिटमेंट आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज द मोमेंट यू वांट टू राइट, यू विल हैव टू डू अ कमिटमेंट. इसीलिए जब आप लिख, कोई भी इंसान जब आपको लिख के मांगता है तो आपको डर लगता है ना, क्योंकि वो कमिटमेंट है एट 3 डिफरेंट लेवल्स, माइंड, बॉडी एंड ब्रेन. ये तीनों जगह पे कमिटमेंट. इसलिए साइको न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी होता है आपका राइटिंग. Generally, your body performs 3 different types of actions. The first action is a reflex action. You know what is a reflex action? When your body behaves without asking to you, आपका बॉडी आपको बिना पूछे अगर मूव करता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टचिंग टू अ हॉट पैन, what will happen? You say, oh, it's hot. Now this action is a reflex action. Somebody is trying to hit you, you will try to save yourself. It's a reflex action. So your body performs reflex action in under 2 circumstances. Number 1, when it wants to save itself. जब बॉडी खुद को बचाना चाहता है तो ये reflex action होता है. All the actions which your body performs to save itself, it's a reflex action. Second, whenever your body wants to reproduce, तो रिप्रोडक्शन का भी एक्शन जो है रिफ्लेक्स होता है और सेविंग का भी एक्शन रिफ्लेक्स होता है. इसलिए वो जो पागल लोग होते हैं, जिनको आप पागल कहते हो कि उनको माइंड नहीं चल रहा है, देन ऑल्सो दे नो हाउ टू सेव देमसेल्फ एंड हाउ टू रिप्रोड्यूस. इसलिए जब अगली बार आपका किसी गली नुक्कड़ पे अपना आपका गर्दन घूमेगा किसी सुंदर ऑब्जेक्ट को देखे, तो समझ जाओ कि आपकी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है, आपका उसमें कोई दोष नहीं. ठीक है. सो second level of action is the voluntary action. Voluntary action means you choose to move from point A to point B. That is your voluntary action. This is your choice. But while moving from point A to point B, your body moves in a certain way. How many of you believe that just by watching you from behind or from somewhere, from a distance, your close ones, near and dear ones can know that this person is walking? मतलब आप चल रहे हो तो क्या आपके चलने के तरीके से लोग गेस कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते. क्यों? People will guess who is walking. Why? Because you have a certain way of walking. Now this certain way is, the way Sanjay Dutt walks. He has this way he walks, or maybe some other person is walking like this way. So there are certain movements which are happening when you are walking, and these movements are not being controlled by you. These are involuntary actions. So while performing any voluntary action, there are number of actions which are happening which are involuntary. तो आप चल रहे हो तो हो रहा है, बात कर रहे हो तो हो रहा है, आप. इसीलिए जब आपका इंट्रोगेशन होता है ना, आई बिलीव कि ऐसा कोई इसमें नहीं ज्वाइन किया होगा जिसका सीवीआई इंट्रोगेशन किया रहेगा, लेकिन होता है तो जो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट होता है उसमें यही चीजें देखी जाती है कि आपकी बॉडी इनवॉलंटरी एक्शंस क्या क्या कर रही है. व्हाट ऑल इनवॉलंटरी एक्शन बीन डूइंग बाय डन बाय योर बॉडी. योर पाम्स आर गेटिंग स्वेटी, your heartbeat is getting faster. Do you remember the day you spoke for the first time to your crush? जब आपने पहली बार अपने क्रश के साथ बात किया तो क्या हुआ था, तो वो इनवॉलंटरी एक्शन है. वो दर्द दर्द जो होगा, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी. तो ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आती है, एंड यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स. You cannot control your involuntary action. These are happening, when you are speaking, walking, doing it, they will happen all the time. So when, अच्छा, जिनका वॉइस ब्रेक हो रहा है ना, हो सकता है आपके एंड पे
problem because most of the people are able to hear it clearly. Am I right or not? You all right? A lot of people are complaining about the breaking, but it is happening with you. So your connection has a problem. So just sort it out. Okay. Now, यहाँ पे when we are talking about the involuntary actions, all of you just write A right now. Type write A लिख दो आप, small a जो है आप book पे लिख दो. A. All of you just type A. So many of you write A. So when you are writing A, are not here in your book. Okay, write A in your book. So every single time when you are writing A, what is happening? When you are writing A, what is happening? Your A is different. You are choosing to write A in a certain way, but the way A comes onto the paper is different. किसी का स्क्वीज है, किसी का ये है, किसी का लूप आ रहा है, किसी का नहीं लूप आ रहा है, किसी का आमिर खान के जैसा ये है. You know, so many people have so many different kind of A's. Now, choosing to write something is a voluntary action, but the way A comes onto the paper is a involuntary action. तो जो सोचते हो आप लिखना वो वॉलेंट्री है, लेकिन जो आएगा पेपर पे वो इनवॉलेंट्री. इसीलिए हैंडराइटिंग एनालिसिस इतनी सारी चीजें डिकोड कर पाता है, क्योंकि आपका जो राइटिंग है वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से आता है. वो इनवॉलेंट्री, आपको कोई कंट्रोल नहीं. आप कंट्रोल करके 2-4 लाइनें लिखोगे, जैसे ही 1.5 पेज लिखने को बोलोगे हम लोग, वो 1.5 पेज में आपका कंट्रोल छूट जाएगा, फिर वो आपका वही राइटिंग आएगा जो आपका ओरिजिनल है. So you cannot control the way you write for longer time. Am I right or no? All of you have experienced this, right? That is why very few people will have a control. A lot of people do not have that control. Okay, so this is the involuntary action. That is why we can decode your subconscious mind. Now I am talking about conscious, subconscious, conscious, subconscious. How many of you are aware about conscious and subconscious mind? कितने लोगों को पता है कि क्या conscious है, क्या subconscious? So Girish, Nita, so many people are available. Aware. Great, very nice. Okay. For those who are not aware, what is conscious and subconscious mind? So conscious mind is a very small mind. It has very limited capacity. So when you are listening to me right now, it is the conscious mind. तो आप एक समय पे एक चीज जो करोगे, उसमें जब भी आपकी इंद्रिय इन्वॉल्व हो जाएंगे, whenever your organs, मतलब these organs, sensory organs are getting involved, this is a conscious mind. Conscious mind, all the time the conscious mind is there. It's like watching a TV. When you watch a TV, at a time you are watching one channel. That is a conscious mind. But if I have to ask you how many channels are there in the TV, what will be the answer? Your answer will be thousands. Now these thousands are subconscious mind. So while you are listening to me, you are recording all the things which are happening around you. Maybe the fan, maybe the AC, maybe the vehicle, or your kids playing. These all things are getting recorded without you being aware. And these recordings are happening in the subconscious mind. And this subconscious mind of yours is responsible for your entire life. Your entire life is getting manifested through the subconscious mind. And your writing is directly connected to the subconscious mind. So if you want to change your life, you will have to work with the subconscious mind. You will have to tell subconscious mind something. And the subconscious mind is the most dumb mind. You know, it is like, it is the mind which will execute whatever you are going to tell him. Okay? तो जो भी आप बोलोगे, subconscious, जो भी आप चीजें बोल रहे हो, subconscious mind will just do it. It doesn't have any kind of filter. तो आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है आपका सबकॉन्शियस माइंड. जो भी अच्छा हो रहा है उसका भी सबकॉन्शियस माइंड, जो बुरा हो रहा है उसका भी सबकॉन्शियस माइंड. It means if we want to improve our life, what we will have to do? We will have to talk to the subconscious mind in the right way. Correct?
अगर सबकॉन्शियस माइंड को मैंने सही चीज बताई, सही चीजों के बारे में गाइड किया, तो वो चीज करेक्ट तरीके से करेगा और उसके बाद हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। करेक्ट, यही है ना। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? So let us do a small experiment to understand what language your subconscious mind understands. Okay, एक छोटा सा experiment है. All of you switch on your videos and just look at me right now. Okay, जो भी मैं बोलूंगा अभी उसको आप शांति से देखो और अपना आंसर को नहीं चेंज करना है. Don't change your answer at all. Okay, whatever I'm going to say, just be focused. Don't change your answer. And now listen to the instructions very, very carefully. So imagine any two simple geometric shapes like square or rectangle. Okay, now I said square and rectangle, so let it leave them aside. Now think about any two simple geometric shapes and put one thing into another and don't change your answer. Don't change your answer. And I said, look at me. I did not ask you to close your eyes. A lot of people are closing the eyes. So how many of you we are thinking about the triangle and the circle? Oh God, am I a magician? So many people are thinking about the triangle and the circle. Now, how did I come to know about this? मुझको कैसे पता चला कि आप सभी लोग ट्रायंगल और सर्कल के बारे में सोचोगे? मैक्सिमम जो भी देख रहे थे मुझको, तो उसका आंसर है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो द आंसर? ओके, उसका आंसर है मैंने आपको बताया. मैंने बोला नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया. कैसे बताया? डू यू नो हाउ डिड आई टेल? आई डिड दिस, राइट? मैंने ऐसे किया और ऐसे किया. So this is the language of the subconscious mind. I did this and then this. So the language of subconscious mind is the symbolic language. और अगर subconscious mind का language symbolic language है, तो which symbols have you used most in your life? अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा symbols आपने कौन से यूज किए हुए? Don't talk about the emojis. This no, I'm not talking about the WhatsApp language, okay, and WhatsApp symbols. Which symbols have you used the most in your life up till now? Agar, which symbols have you used the most in your life? Circle. Okay, somebody says hi. No, not hi. No circle. Wave of hands. No. The symbols which you have used most in your life are handwriting, alphabets, isn't it? तो जो भी आप लिखते आए हो बचपन से, पढ़ते आए हो बचपन से, वो सभी चीजें क्या है? वो सभी चीजें जो है सिंबल है. And that is why handwriting is such a powerful tool to change your life, because it is going to talk about your subconscious mind through your handwriting. तो handwriting के जो symbols है, alphabet जो है, वो बहुत powerful है. Am I having the lag? A lot of lag. अभी lag आ रहा है क्या मुझको? Because I'm seeing a lot of people not moving very fast. Voice is clear? Awesome, great, thank you very much. So handwriting. अब मेरा next question आप सबसे ये होगा, how many of you are a robo? आप में से कितने लोग रोबो है? How many of you are a robo? Can I see the hands? Or yes, I am a robo. आप में से कितने लोग रोबो है? प्रकाश जी रोबो है. Okay. Who else? No? Yes? No? Sometimes? Okay. तो अगर आप रोबो नहीं हो, तो why do you repeat the things? Why do you repeat the way you do the things? तो जब आप चीजें करते हो, उसको रिपीट क्यों करते हो? आपका बात करने का तरीका सेम है, आपका चलने फिरने का तरीका सेम है, आपका लिखने का तरीका सेम है, आपका कई सारी चीजें करने का तरीका सेम है. If you are not a robo, why are you repeating things? So whether you believe or not believe, whether you admit or not admit, you all are a robo. आप सभी लोग जो है वो रोबो हो. You are a
robo with the choice. You are a living robo who has got a choice. A robo which can change its behavior. तो आप सभी ऐसे रोबो हो जो ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड करते हो कि अभी मेरे लाइफ में कुछ अलग होना चाहिए. तो आज तक आप जिम नहीं गए हो, आपका एज 30 साल का है, 30 साल से आप जिम नहीं गए हो. नाउ यू थिंक आई वांट टू गो टू जिम and you start going to the gym and you within a year you have a fit body and you, now people call you a freak robo, gym freak robo, but yes, you are a robo. So you got new behavior installed. So you all are a robo with the choice to change your behavior. I call it as a programming. I call it as a programming. So you all have been programmed and programming will happen to you. So this programming will be seen from the handwriting. Now, when I say programming, which field comes to your mind? जब मैं programming की बात करता हूं, तो कौन से field आपके mind में आती है? It is IT and computers, right? So how does a computer gets programmed? Computer का programming कैसे होता है? Computer gets programmed with the coding, which happens in binary language, the language which is called as the machine level language, 0 and 1. So computer gets programmed with the 0 and 1, and the way computer gets programmed, we also get programmed by 0 and 1. तो हमारा भी जो programming होता है वो 0 1 से होता है. In our case, 0 is something which we cannot see, but it has a lot of impact on our life. Do you know any such thing which you cannot see, but it has a large impact on our life? कोई ऐसी चीज आपको पता है जो आपने देखी नहीं है, दिखती नहीं आपको, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल है आपके लाइफ के लिए? हो सकता है उसके बगैर आप जी ना पाओ. एयर तो दिख सकता है, एयर वी कैन कलर. करेक्ट. इमोशंस, लव, पैशन, विजन, हेट, these are the things which anger, these are the things which you cannot see, but these things have a lot of impact in your life. Lot of you have defined your life using all these emotions. So 0 is emotions, is equal to mother and mother figure. So you all people get programmed by mother and mother figure. What is mother? Biological mother. Mother figure, the people who are like mother to you, like your language teacher, history teacher, your dadi, your bua, all those people are your mother figures. So you get programmed by your mother and your mother figure. तो आपके बच्चे जो आपको देख देख के सीखते हैं, visual language. It is all about the visual language. They will watch you and they will look at you and they will copy you. And you will get programmed by 1. Now what is 1? 1 is father and father figure. So father, biological father. Father figure, all the people who are like father to you, your dada, grandpa, your PT teacher, your sports teacher, your maths teacher, your bade chacha, all those people are your father figures. So you get programmed by these two people. Yes, males who are like father. Now, these things have a huge impact on your life. For example, do you know what German people call to their land? German के लोग उनकी land को क्या कहते हैं? Do you know what they call to their land by any chance? German people call to their land as a fatherland. Yes, Kasturi, you are right. They call it as a fatherland, and we call our land as a motherland. So look at the way we are and they are. हमारे यहाँ पे रास्ते कैसे छोटे हैं, उनके यहाँ पे रास्ते बड़े हैं. हमारे यहाँ पे गली गली से हम जाते हैं, वहां पे गली का कुछ कंसेप्ट नहीं है, बड़े बड़े रास्ते हैं. वहां पे 180 की स्पीड से गाड़ी चलता है, हमारे यहाँ पे 100 को भी क्रॉस नहीं कर पाता है. हमारे तो एक्सप्रेस हाईवे पे भी 100 का लिमिट है ना. सो वी आर डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट. उनकी मशीनों में वो कहते हैं लेके जाओ, स्टेपनी नहीं मिलेगा, और ये मशीन को 3 साल कुछ नहीं होगा, लेके जाओ बिंदास. और हम क्या कहते हैं, हम लोग टाटा या मारुति का गाड़ी खरीदते ताकि कहीं पे भी बंद पड़े तो बाजू में गराज मिले, टूल किट रहे, है ना. BMW में स्टेपनी नहीं होता, टूल किट नहीं होता है, जैसे कि कुछ नहीं होगा, तुम जाओ बिंदास लेके. शोले कहता था 3 साल लेके जाओ, 3 साल का वारंटी गारंटी हमारा है. तो यहाँ पे उनकी मशीनें स्ट्रांग है, वो लोग स्ट्रांग है. उधर की जो फीमेल्स है वो
मस्कुलाइन है वो बहुत एक्शन लेती है. So this is about the fatherland. Come to India, motherland, all emotional people. We eat a lot of variety. Then we are good with literature. We are good with the speaking. We are good with the songs. We are good with the softwares. Again, mind, mother. We are good with the sports which are being played by mind. Chess में अच्छे है, cricket में अच्छे है, जहां पे भी सोचने का वक्त मिलेगा वो उसमें अच्छे. So this is the motherland and fatherland. तो इसी तरह से हम लोग प्रोग्राम होते हैं. फादर का काम है एक्शन लेना, मदर का काम है इमोशंस को देना. नाउ ये जो प्रोग्रामिंग है वो रैंडमली नहीं होता है. दीज प्रोग्रामिंग डजंट हैपन रैंडमली. डू यू नो एट व्हाट एज यू बिकम एन एडल्ट? आप कौन सी एज में एडल्ट होते हो? व्हाट इज द एज एट विच यू बिकम एन एडल्ट? 18. ओके, 18, 25. अनबिलीवेबल. After getting kids. Okay. So the age at which you become an adult is the age of 14. तो 14 साल के, the moment you get hormones in your body and you are capable of reproducing another human being, you are an adult. तो 14 साल के आजू बाजू में you get programmed. Before 14 years, whatever good and bad you see goes to your subconscious mind. Your mind is like an open jar. 14 साल के पहले आपका माइंड जो है वो ओपन जार होता है. जो भी देखोगे, जो भी सुनोगे, जो भी फील करोगे वो माइंड के अंदर चला जाएगा. दैट इज व्हाई वी हैव लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अबाउट व्हिच मूवीज टू बी शोन टू द किड्स, बिकॉज द मोमेंट दे सी सम वायलेंस और some bad things, it will go to their mind directly. So you need to be very careful about what you are showing to your kids, because visual language is very strong language, and the moment you have that kind of language, one second. So if you are showing something bad to your kids, it will go to their subconscious mind directly, and your mind doesn't differentiate between good and bad in that period. 14 साल की उम्र तक nothing is good and nothing is bad. Your mind will only understand strong emotions. तो mind को सिर्फ strong emotions समझेगा. इसीलिए आप जब बहुत खुश होते हो तभी भी आप रोते हो, और बहुत दुखी होते हो तभी भी आप रोते हो, because your mind's response is same for strong emotion, that is the crying. तो ये जो 14 साल का उम्र है वहां तक आपका प्रोग्रामिंग जो है वो आपसे बिना पूछे होता है. After the 14 years of your age, you have a filter in your mind. Now, after the age of 14, you have a filter. Now, this filter will help you to decide what is good for you and what is bad for you. तो हो सकता है 14 साल तक आप कैसे भी किसी से प्रोग्राम हो जाओ, लेकिन 14 साल के बाद आपका जो प्रोग्रामिंग है वो आपके चॉइस के बगैर नहीं होता है. इसलिए कई बार आप अपना बिहेवियर जो है वो बदल पाते हो. You are able to change your behavior, you are able to change your habits with the awareness. Now, what is the biggest problem of your life? The biggest problem of your life is you don't know what is the good behavior and what is the bad behavior and which kind of programming I have. तो मेरा प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है ये आपको नहीं पता. So when you are filtering with the data which you have got from your childhood. तो आपके बचपन से आपके मदर फादर का जो डेटा आ गया है उसी के तहत आप अभी चूज कर रहे हो, आप चॉइस कर रहे हो. उसमें भी हाँ, तो यू डोंट नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, एंड दैट इज व्हाई you are not able to achieve your fullest potential. So this graphology will help you to understand who you are. So now this programming will happen in two parts in the childhood. तो बचपन में ये प्रोग्रामिंग जो है दो हिस्से में होगा, 0 to 7 years and 7 to 14 years. So 0 to 7 years and 7 to 14 years. Now in between 0 to 14 years of your age, between 0 to 14 years of your age, first 7 years you will be programmed by zeros. तो आपका जो प्रोग्रामिंग वो जीरो से होने वाला है. Zero means what? Female, mother like people. That is why when you go to kindergarten, you do not see any masculine teacher over there. कोई ऐसा आपने देखा है कि एक मेल है जो ऐसा सिखा रहा है, now sing blah blah black sheep, how many wolves? You can't, right?
there are only females in the kindergarten or nursery? क्योंकि 0 to 7 years के बीच में किसी भी मेल को किसी बच्चे के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत कठिनाई जाएगी. इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट पॉसिबल मोस्ट ऑफ द टाइम. Between 0 to 7 years of your age, the kid and the mom are two bodies and one life. दो जिस्म एक जाने. yes or no? इसलिए अगर बच्चे, छोटे बच्चे का कभी आप अपमान करके देखो, बोले यार कितना गंदा दिखता है, उसकी मदर तुरंत आएगी, उसको लेके जाएगी, उसको नहला धुला के वापस आपके सामने लेके आएगी, क्योंकि उस बच्चे का अपमान उस मदर का अपमान है. Am I right or wrong? All the ladies who were born once upon a time, जो छोटे छोटे बच्चे आपने संभाले हुए है, yes or no? है ना, ऐसी हुआ था आपके साथ. yes. After 7 years फ्रीडम, जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम. लेकिन बिफोर 7 years वन लाइफ. थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है यहां से 1 से भी होता है. Now between 7 to 14 years of your age, the maximum programming will happen with the 1. तो यहाँ पे जो ज्यादातर प्रोग्रामिंग होगा वो 1 से होगा. It means the programming will happen through the male, through the masculine, through the father. So father will program. Father will make sure that you see. ये वो एज है. इस एज में आपका बॉडी, आपका वेट, आपका काम करने की क्षमता, your ability to understand things will increase rapidly. तो ये वो एज है जहां पे आपकी फादर की आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है. अगर आपने इस एज में अपने बच्चों को समय दिया, तो बाद में समय नहीं दिया तो भी चलता है, बिकॉज दिस एज डिफाइंस द परफॉर्मिंग एबिलिटी ऑफ योर किड. तो आपका बच्चा कितना बड़ा, अच्छा और बेहतरीन काम करेगा, ये एज डिफाइन करता है. इस एज में उसकी परफॉर्मिंग एबिलिटी होती है. इस एज में उसका इनिशियल संस्कार, यहाँ पे द एबिलिटी टू जज, इस एज में एबिलिटी टू परफॉर्म डिफाइन होता है. और थोड़ा वो जो प्रोग्राम है यहाँ पे 0 से भी होता है. Now there is a possibility that you have more number of males in your life. आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मेल्स थे, मतलब सब भाई थे, चाचा थे, दादा थे आजू बाजू में, राइट? तो ऐसी केस में यू हैव बीन मोर प्रोग्राम विद द 1. तो आपका प्रोग्रामिंग जो है वो 1 से ज्यादा हुआ है. इसीलिए आपको ऐसी लड़कियां दिखेगी जो बाइक चलाती है, बिंदास रहती है, बहुत एक्शन लेती है, बहुत काम करने की क्षमता है, ऐसा बिंदास किसी को भी पीट भी देती है. नाउ दिस लेडी हैज लॉट ऑफ 1 इनटू हर सिस्टम, सो दिस लेडी बिकम्स अ टॉम बॉय गर्ल. ऐसे ही कोई पुरुष रहेगा जिसके आजू बाजू में बहुत महिलाएं रहेंगी, दादी है, नानी है, बहुत सारे बहनें हैं, तो चाचियां है, बहनें हैं, तो द पर्सन विल बी मोर फेमिनाइन इन नेचर. सो द पर्सन विल बी वेरी सॉफ्ट, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी इंटेलिजेंट, एंड writer, poet, all these people are very feminine people. So a writing cannot tell you about who is male or who is female. Writing will tell us who is a masculine person and who is a feminine person, but writing will not be able to judge or tell the gender, because gender is a physical thing and writing is all about the non-physical thing. So this is the first limitation of graphology, that it cannot detect the gender. It also cannot detect about the left and right hand dominance. तो आप लेफ्टी हो या राइटी हो, ये भी राइटिंग से नहीं पता चलता है, because again lefty and righty is a physical thing and writing will talk about non-physical things. It talks about the mindset, it talks about the subconscious mind. Then writing also cannot tell you about are you a mature person or immature, are you a old person or young person. तो आपका एज यहां से डिटेक्ट नहीं होता है. हो सकता है 14 साल का लड़का भी बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है और 70 साल के वृद्ध भी मैच्योर्ड नहीं है, चाइल्डिश नेचर के. सो राइटिंग कैन नॉट टेल अबाउट एज एज वेल. तो एज नहीं पता चलता है. इट कैन नॉट टॉक अबाउट नेशनलिटी, वेदर यू आर इंडियन और अमेरिकन. We cannot detect from the handwriting. There is a chance that America has more number of Indians than India, because those people are nowadays getting up early and doing the meditation, and we are not doing the same. So it will talk about the mindset, whether the person is spiritual or not spiritual or this and that, but it cannot talk about the
country, it cannot talk about religion, it cannot talk about nationality, it cannot talk about the your creed, caste. These all things are not detectable in the handwriting. But handwriting is very, very powerful in certain cases. For example, the first use of graphology is knowing yourself. आपने गाना सुना है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, सुना है ना आपने गाना? तो अगर उस पिक्चर में ऋतिक रोशन ने ग्राफोलॉजी सीखा होता तो ये गाना वो नहीं गाता, because graphology would have given the answer to him that why he is like that. So the first use of graphology is knowing yourself. You will come to know why you are like this, why you like to do the things in certain way. आप चीज मसाला डोसा नहीं खाते हो या चीज मसाला डोसा ही खाते हो? क्यों आप अपनी शर्ट जो है वो नॉर्मल खरीदते हो, अपनी जो बहुत फ्लैशी चीजें नहीं खरीदते हो? ऐसे जो भी चीजें, जो भी आपका व्यवहार है वो ऐसा ही क्यों है? इसका आंसर आपको ग्राफोलॉजी देता है. दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ ग्राफोलॉजी, नोइंग योर सेल्फ. सेकंड यूज ऑफ ग्राफोलॉजी इज फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट किड्स? छोटे बच्चे 14 साल के नीचे कितने लोग? अंजलिका, तेजस्वी, रिकी, योगिता, शैलिका, लॉट ऑफ पीपल यू आर ना. तो ये 14 साल के नीचे के जो बच्चे, उनके साथ आप क्या बोलोगे तो वो क्या बनेंगे, कैसा व्यवहार करोगे तो वो कैसे बनेंगे, ये ग्राफोलॉजी आपको सिखाता है. इट टॉक्स अबाउट हाउ टू बिहेव विद किड्स टू प्रोग्राम देम इन अ सर्टेन वे. माय डॉटर will always sit for meditation, will do the mantra chanting very comfortably, and she likes to do it. And why she likes to do it? Because we know how to program her. So once you learn graphology, you have that capacity to influence your kids in a particular way. जो भी आपको influence छोड़ना अपने बच्चों के ऊपर, वो आप कर सकते हो. So that is the second use. Third use, selecting or choosing the life partner. Okay, lot of you are getting disappointed. सबके ऐसे गर्दन झुक गई, सब लोगों ने no, we lost a chance. Okay, so I know you, most of you lost a chance, but you can write oblique, है ना, दूसरा नहीं ढूंढेंगे, लेकिन we can understand the existing one. So choosing the life partner oblique, understanding the existing one. Okay, that is the third use of graphology. तो आप अपने हस्बैंड को, क्यों ये इतना गुस्सा करता है, क्यों ये मेरे से इतना झगड़ता है, क्यों ये बॉस के साथ झगड़ के आता है, क्यों ये इसको कोई क्वेश्चन पूछा तो ये भड़कता है, तो ये क्वेश्चंस, या क्यों ये मेरी जान खाती है, क्यों ये मेरे से इतना डाउट करती है, क्यों उसका दिमाग इतना तेज चलता है, क्यों उसको पता चलता है कि मैं कहीं से कुछ करके आया हूं. तो ये जो चीजें हैं, whose wife has a detective mind and all, तो ये चीजें भी आपको हैंडराइटिंग में पता चल जाएगी. तो you will know your partner in a better way. This is the third use of graphology. Fourth use of graphology is choosing the right employees or promoting or assessing the existing one. तो जो आप एम्प्लॉई हायर करते हो, तो वो एम्प्लॉई कैसे काम करेगा, कितना काम करेगा, कब काम करेगा, कब नहीं करेगा, ये सभी चीजें भी आपको राइटिंग से पता चलती. So you can hire right people and you can assess the existing people correctly. Okay, whose potential is this and whose potential is not good. So all these things can be judged from the handwriting. This is the fourth use of graphology, assessing the employees or hiring a right employees. So now fifth use of graphology. Fifth use of graphology is to selecting the business partner. So you can know whether to get into the partnership of business with this person or not, whether he compliments me or he's like me, or he has a totally different nature. Will he go out in the market and perform? Will he not go out? So all those things are there in the handwriting. Now the next use of graphology is catching the criminals. Catching the criminals. It means if you have a pool of 100 people who all were involved in the robbery, that can be seen in the handwriting very easily. And how many of you would like to learn this? So I will teach this. देखो, जितने भी लोग Wednesday को join करेंगे, मैं Wednesday को, our session will be of 3 days, today, tomorrow and day after tomorrow.
So I would be teaching how to catch criminals from the handwriting on the day 3. And you will have to remind me. I will teach it on the day 3. So Wednesday around 7:50 we will teach this, how to catch criminals from the handwriting. This is the 5th use of graphology, catching the criminals and all. Okay, so this is about the use and the way the graphology is. Are you guys enjoying? आपको मजा आ रहा है सभी को? Yes, great. Now let's go to the next level. Let's learn about the page. So let us learn this thing with the riddle. तो मैं आपको एक रिडल दूंगा. जिन्होंने ये पहले सुना हुआ है, मुझको पहले ये सेशन में अटेंड किया, वो कृपया आंसर ना दे. All those people who are new, only those people answer. Tell me one thing which is common between all of you, common and equal. One thing which is common and equal between all of you. Common and equal. Between you and me, common and equal. Okay, so some intelligent person is already there. So common and equal between you and the rock on this earth. What is common and equal between you and the rock? So quite a few people are Tejasvi is intelligent and somebody is also intelligent. So yes, the common and equal thing between all of you and me and the rock and everything which is there in this planet is the time. So every single one of you has got only and only 24 hours. तो आप सभी के पास time common भी है और equal भी है. And that is the first thing about the graphology. A page is equal to 24 hours. तो ये जो page है, अगर आप कोई भी पेज बनाते हो तो ये जो पेज है वो आपको 24 घंटा दर्शाता है. The page talks about 24 hours. And the way you treat this page will tell us the way you are treating your day. तो आप इस पेज को कैसे यूज करते हो, इस पेज के साथ क्या क्या चीजें करते हो, यही ये बताता है कि आप अपने लाइफ में एक दिन में क्या क्या चीजें करते हो. तो पेज इज इक्वल टू 24 hours. इस पेज को मैं 2 हिस्से में डिवाइड करूंगा और इस 2 हिस्सों को मैं फर्दर और 2 हिस्से में डिवाइड करूंगा. तो आई विल गेट लेफ्ट, आई विल गेट राइट, आई विल गेट टॉप एंड आई विल गेट बॉटम, है ना. 4 थिंग्स. तो 4 चीजें मुझको पेज में मिली है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम. Now, what is left? Let us understand for left. So how many of you have seen the photo of Ardhanarishwar? सब लोगों ने देखा? Okay. Those who have not seen, all of you who have not seen, let me show you the photo of Ardhanarishwar. This is a very ancient photo of Hindu culture. In Ardhanarishwar, if you put yourself in that position, you will find that the left hand side is given to the Shakti, female, and the right hand side is given to the male, that is the Shiva. So these are the images of Ardhanarishwar. Now this is how the Ardhanarishwar photo will look like. Okay. Ardhanarishwar. So left hand side. And even if you, in the common world, if you talk about the brain, if you talk about your brain has also got 2 sides. अगर ब्रेन की भी बात करते हो तो आपके ब्रेन में भी 2 हिस्से हैं. एक है आपका लेफ्ट ब्रेन, एक है आपका राइट ब्रेन. Now left brain is all about logical things. It's about structured things. It is about maths. It's about engineering. So left brain is a logical brain, which shows a masculine nature. And right brain is all about feminine things. Right brain is about creativity, language, coloring, you know, so many things are there. No? Right brain is linguistic things, creativity, all things in the right brain. This is a feminine brain. And left brain controls the right side of your body, and right brain controls the left side of your body. So left hand side of your body, according to the Ardhanarishwar, according to the modern science, is about the feminine things, female. So now, which is the first thing you have got from female in your life? तो आपके लाइफ में पहली चीज जो किसी भी फीमेल से आई है वो क्या है?
the first thing which you got from any female in your life is what? So the first thing which you got from any female in your life. Somebody says emotions, birth, life and birth, love. Okay. So the first thing which you got from your mother, obviously mother was the first female in your life, is protection. She made sure that you are protected inside the womb from the day you got the birth, zygote. जब एक सिंगल सेल एनिमल आप बने थे तब से लेके अब तक वही चल रहा है. पहले 7 साल तो ये चलता था कि ये मत करो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, इससे मत मिलो, ये इससे बात मत करो, राइट, ये मत खाओ. So her job is always like to protect you till the age of 7, and after that nourish and again to protect. Whenever she will call, she will ask the question, खाना खाया क्या, है ना? So have you taken your food? So this is the default nature. So the left side of the things is for mother, is for security. Left side of the page will talk about the security. Now which all things in your life gives you security? तो आपकी लाइफ में बाकी कौन सी चीजें जो आपको सिक्योरिटी प्रदान करती है? Which all things in your life gives you security? Don't talk about money. Money से सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है. Money doesn't give you security. In fact, more rich you are, more insecure you are. You know, so many people are looking at you now. So the things, family, correct. Manjusha, family is correct. Relationship, okay, relationship, no, but family is correct. So can I say country gives you security? Country, by putting a soldier across the border, it gives you security, right? Can I say your family, parents gives you security? Obviously, parents gives you security. Your past, people need to know your past. If they don't know your past, they will kill you or they will put you in the jail, because people are afraid of the people who do not have any past. So you need to have passport, driving license, PAN card, ration card. You need to have your identity cleared. So past, parent, country, religion. Religion also protects you. Religion also makes you secure. And society. The society will also protect. जिस society का हिस्सा होंगे उसको वो भी आपका protection करेगा. So left side will talk about past, parent, country, religion and society. लिख लिया सभी ने? इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको notes भी देने वाले. Day 3 पे you will get notes. All those people who are going to attend on day 3 will get the notes, ready-made notes. So even if you don't write, everything is there already. What about the right side? Now right side is exactly opposite to the left hand side. तो राइट साइड पे आपको जितना भी कुछ चीज दिखती है वो एग्जैक्टली अपोजिट है लेफ्ट के. सो इफ लेफ्ट इज इक्वल टू सिक्योरिटी, व्हाट विल बी द राइट? राइट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द लेफ्ट. सो लेफ्ट इज सिक्योरिटी, व्हाट विल बी द राइट? Don't say insecurity. Yes. Taking risk. Correct. So risk, opportunities, confidence, children, future, success. These all things are there on the right side. Risk, opportunities, confidence, children, future, success. These all things are on the right side. Now there are some languages in the world. There are some languages in the world which travel from right to left. Do you know any such language which travels to right to left? Right to left जाने वाली languages है क्या कोई आपके माइंड में? Urdu. हाँ, correct. Urdu is there. What else? Sindhi, correct. Sindhi is also there. Arabic is also there. Persian is also there. Hebrew is also there. So these all language are traveling from right to left. So they are going from success or from race, from confidence to the religion, the country, the past. That is why all the people, especially let's assume the Pakistan. Now Pakistan has Urdu as the national language. So Pakistan will always talk more about the past and religion and country. Now all the things which are on the right hand, left hand side. So those people will be more security oriented, more past oriented, more religion oriented. Now again, if you talk about Sindhi, Sindhi also travels from right to left. So now Sindhi people will be more community oriented. They are tight as a community. They stay nearby. They help each other. They are there with. So the moment languages are traveling from right to left, the person will be more society oriented, religion oriented, community oriented, and the security oriented. Now coming to the top side.
How many of you would like to know about the top side? Just say top in the comment box. How many of you are excited to know about the what is the top? क्योंकि top बहुत secret है. ये top जो है वो top secret है. So Sparsh top, German top, Jina, Megan, Jyoti, Pooja. What is top? Have you ever thought, for example, Abhi, right now, if you happen to hear a national anthem, what will you do? अचानक से आपको राष्ट्रगान सुनाई देगा तो क्या करोगे आप? All of a sudden you are listening to, you will stand up, you will stand up and you will be quiet, right? If you participate in somebody's cremation, what do? If you are participating in somebody's cremation, you go near dead body, you stay there, and you stay there without doing nothing. You don't do much. You are there, silent. Yeah, you are silent. तो चुप रहते हो आप. अचानक से अगर आपके घर में कोई एल्डरली व्यक्ति आ जाता है और आप मस्ती कर रहे हो तो क्या करते हो? You stand straight, you let them sit, and you are quiet again. You behave properly. Have you thought about this? Whenever a great person dies, or any national celebrity dies, next day we have क्या बोलते हैं उसको, मौन व्रत, 2 minutes of silence. We keep Have you ever thought what is the logic between having a 2 minutes of silence and that man's death? Or how many of you go and sit on the empty chair of boss? अगर बॉस नहीं है, बॉस की चेयर एम्प्टी है, जाके बैठ जाता. How many of you are like that? सच सच बताना. I can read faces, okay, if you're not aware. No? So you are good kids. So why do we avoid doing that? कि चेयर एम्प्टी है फिर भी आप नहीं बैठ रहे, या हम लोग 2 मिनट का मौन व्रत रख रहे हैं. What is the logic behind all these things? So time and space are not two different things. They are the same side, the two sides of the same coin. Time and space. If you do not have space, it means if you do not have a body, what is the use of time? No? Body नहीं तो time का क्या करेंगे? और time नहीं है, अगर आपका time खत्म, आप ऊपर, तो body का क्या करेंगे, right? So time and space are two same things, almost same thing. That is why offering an empty time or empty space shows a respect. तो जब भी आप किसी भी व्यक्ति को खाली जगह या खाली समय देते हो तो वो रिस्पेक्ट कहलाता है. इसीलिए जब आप 2 मिनट का, इसीलिए अगर आपने 2 मिनट का किसी के लिए मौन व्रत रखा तो वो रिस्पेक्ट कहलाता है. इसलिए आपने किसी को बैठने को जगह दी तो वो रिस्पेक्ट कहलाता है. इसलिए जब आप झुक के पैर छूते हो, when you bend down and touch the feet of your elders, it shows respect because you are leaving your space. जो जगह आपने ऑक्यूपाई है उसको छोड़ के आप पीछे नीचे जा रहे हो. इसलिए जब चाइनीज जापानीज आपको रिस्पेक्ट देना चाहते तो वो भी कमर से झुक के आपको सलाम करते. सो व्हेनेवर यू, इसलिए अगर आपके मॉम डैड आपको डांटते हैं तो आप गर्दन झुका के खड़े होते हो, क्योंकि गर्दन का झुकाना मतलब इतना स्पेस छोड़ना. इट इज ऑल्सो अबाउट द रिस्पेक्ट. सो व्हेनेवर यू लीव an empty space or empty time for someone, it calls respect. And the top side of the page is for respect. Top side of the page is for respect. Now let's understand the bottom side. So Madhu, I understand your problem of, but I have explained this in some other lecture with the English, so we will give you that recording. At times the flow, Hindi has a better flow. English, I have to think a lot to speak. Now, what about the bottom side? How many of you seen the photo, or how many of you have visited Shanghai or Hong Kong? नहीं देखा Shanghai or Hong Kong? Okay. How many of you have seen the photo of Shanghai or Hong Kong? देखा है कभी Shanghai और Hong Kong का फोटो तो देखा होगा. अरे अभी कोरोना में तो देखा रहेगा ना, at least, right? देखा है. Very nice. So all of you, let us check whether you have seen the photo or not, or whether you have seen the city or not. How are the boards of these shops over there? Shanghai और हांगकांग में boards कैसे होते हैं दुकानों के? How are the boards?
Tell me. You don't know? At least have you watched the Kung Fu Panda movie? Kung Fu Panda. In that also he reads the scroll, right? What is that? It's our, yes, Madhuri, correct. They are vertical in nature. The boards are vertical in nature. Why? Because the old Chinese way of writing was from top to bottom. They used to write from top to bottom. That is the old Chinese way of writing. So what is the bottom side? Bottom side is all about the execution. That is why Chinese people are good with the execution. They will execute things. They will not look back. They will not have second thought. They will just go with the killer instinct and they will make sure that it is being done. So you must have seen the way they handled their corona patients. Done, they will just do it. They will not think twice. Very good with the execution. That is why Chinese products are chale to sham tak, nahi to chand tak. Right? Because they will execute. They will not care about the quality and all. They will just make sure that it is finished. In our culture, I believe, this is my belief, okay, I believe that we are not very good employees. I had factory. I had 15 to 20 people working under me. And I have given all them some work. And every single one of them has used his own brain as well. मतलब मैंने उसको कुछ काम दिया, वो गया और अपना दिमाग लगा के कुछ तो भी लेके आया. मतलब कभी भी उसने उतना काम नहीं किया जितना मैंने बोला. He never did exact amount of work. Some extra work he always did. So we are born entrepreneurs. We are not, even when our God told us something, we asked him questions. है ना, तो हमारा नेचर है वैसे कि हम इंक्विजिट है, हम एंटरप्रेन्योर है, हम कुछ तो भी अलग करने की टेंडेंसी रखते हैं. So we are that kind of people. But Chinese people, they have been given commandments and they will follow it. They will make sure that every single rule is getting followed by, because their writing is top to bottom. So bottom side of the page will talk about the execution. So we have understood about the page. We have understood about the basics of the graphology, how it, and tomorrow we will learn furthermore about how exactly to interpret, analyze the writings. कैसे देखेंगे? How many of you have done your writing that basic of writing the basic sample? आप सभी ने basic sample अपना लिख लिया सभी ने? But right, if not, make sure that your sample is ready, because tomorrow we will have a look into your handwriting. है ना, कुछ जो lucky लोग होंगे उनका writing हम लोग कल check करेंगे. We will check your writing tomorrow. है ना, तो हम सीखेंगे भी और साथ ही साथ check भी करेंगे, हम देखेंगे भी, है ना. So right now, if you have any questions, raise your hand. I will unmute you and you can speak and you can ask me questions. I believe that you enjoyed till now. कल इससे ज़्यादा और मजा करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे. Only one request: if you want to ask questions, make sure that your video is on. If your video is on, then I will unmute you and you can speak. Yes, प्रीति जी, आपका क्या question है? Yes, we can read Hindi, English, German, any language. It's not problem. Yes, Preeti ji. Hello. Yeah. Sir, can we do anything at the age of my child is 17 years? I can do anything about that. Okay. So if your kid is below above 14 years of your age, how to help him? The simple way to help him is ask him to join this course, join the session, understand what he is and choose what he wants to become. So after the age of 14, the person will choose what he wants to be like. And for that, he needs to know what he is first. तो उनको ये पता करना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, और जब ये पता चलेगा कि मैं क्या हूं, उसके बाद वो खुद को बदल पाएंगे. तो लर्निंग अबाउट योरसेल्फ इज द राइट वे टू चेंज यू, है ना. समझा प्रीति जी? तो आपको उनको ये सेशन करवाने पड़ेंगे, एंड दैट इज हाउ दे कैन चेंज. Okay, sir. Okay. Yes, Sparsh ji, आपका क्या क्वेश्चन है? Yeah, hi. I have left, I always write in bold letters. मैं हमेशा bold letters में लिखता हूँ, regular letters में लिखता नहीं हूँ. आज आपने कहा था तो मैंने कुछ लिखा है, but it's very, very, very bad handwriting. क्योंकि लिखा ही नहीं. What does that show about me? I would like to know.
कि ये बोल्ड लेटर्स में जो लिखता हूँ मैं तो हाँ, थैंक यू वेरी मच हाँ फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो जब मैं आपको पूछता कि एनी क्वेश्चंस, तो दोज क्वेश्चंस आर सपोज टू बी रिलेटेड टू व्हाट वी हैव स्पोकन अप टिल नाउ। कुछ डाउट्स है, कुछ नहीं समझा है, कुछ आपको क्लैरिटी चाहिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है स्पर्श जी, इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि यू आर वेरी गुड विद द प्रेजेंटेशन। आप कभी भी कुछ अगर जब प्रेजेंटेशन करने जाओगे तो यू विल बी वेरी गुड विद इट। okay, thank you so much, and I'm sorry I went off the topic. No, so you got it right. You are good with the presentation. Yes or Thank no? you so much. Thank you. Yes, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Okay. So yes, name Kumar ji, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं अभी ग्राफोलॉजी के बारे में मीन्स पहला भी थोड़ा सेंटेंसेस वगैरह लिखा था, आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाया इसमें मैं, तो उसके बारे में मेरे को थोड़ा जानने का था। मीन्स अभी आपने जो लेफ्ट राइट ब्रेन का और 4 टाइप्स का, तो अपर और लेफ्ट राइट ये जो बताया था वो मैं सीखा नहीं था, अभी आपने अच्छा बताया, तो आगे और आगे कल जानना चाहूंगा। हाँ, तो निमकुमार जी मिलते हैं कल इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल लेते हैं हम लोग। ओके, या रूपाल जी क्या क्वेश्चन है आपका? या गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हैंड राइटिंग कई बार हम कॉन्शियसली लिखते तो बहुत अच्छे से लिखते हैं, और कभी जैसे अभी आपने मुझे सेशन के बाद बीच में बोल के मैं जल्दी में लिख रही हूँ तो बहुत स्क्रिबल होती है। इतनी फेसेस राइटिंग के होते हैं तो कैसे उसमें वाला हम अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे, कौन सी राइटिंग हम चूज करेंगे अपने? So how many of you have this question? This is a very unique question, that when I write calmly, my writing is good. When I am writing very fast, my writing is haywire. How many of you have similar tendencies? Okay, Vaishali, Shilpa, Julie, Naresh, Nitaji, so many people. So what is the analysis of this? If you are writing patiently or calmly and your writing is good, writing fast, writing is bad. It means whenever you have this tendency, it means that you will crumble under pressure. तो जितने भी लोगों का हैंडराइटिंग बदलता है फास्ट लिखते समय, ये लोग प्रेशर में इनका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है, प्रेशर में ये क्रैक होने की संभावना होती है, प्रेशर में ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। करेक्ट है फॉर ऑल द पीपल हु आर राइटिंग। सो all those people whose writing is bad, when they write fast, they will crumble under pressure. So how to become good with the pressure? Write with clarity. जो भी लिखो वैसे ही लिखो जैसे शांति से लिखते हो। Okay, then yes, संध्या जी आपका क्वेश्चन है, संध्या सिंह। Can you unmute? संध्या जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। All those people who want to ask question, raise your hand in the app, so it will be easy for me to unmute you. सर थैंक यू, वो आंसर हो गया था अभी, थैंक यू। Awesome. Very nice. Yatendra Khatri, what is your question? सर जब भी मैं कुछ लिखती हूँ तो उसके अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम गैप मिलता है तो स्टार्टिंग में जो पेपर के साइड में होता है ना, वहां पे कुछ भी पिक्चर्स ड्रॉ कर देती हूँ, वो पिक्चर्स ड्रॉ कर देती हूँ, लेकिन वो मुझे खुद ही अच्छी नहीं लगती बाद में। व्हाट इज योर क्वेश्चन कि यू डू समथिंग? अगर कुछ भी राइटिंग के लिए बोला, लाइक मैंने कोई ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो उसके साइड में जहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और अगर वो रफ काम है तो मैं उसके साइड में कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, लाइक फ्लावर बना दिया, लीफ बना दिया, कुछ भी बना दिया, बट वो पिक्चर्स ड्रॉ करने के बाद मुझे खुद से ही अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरे को वो जो मैंने ड्रॉ किया वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरा एक पर्टिकुलर जो चीज मैंने देखी है, आपको ना यतेंद्र जी, आपको ना ड्राइंग क्लास लगाने पड़ेंगे फिर। नहीं, वो शेप्स मुझे जो पसंद है वो। let me answer. So now this is called as doodling, before that Rashmi ji saying but I perform good in pressure. So it's not about the performance, it's about your behavior. So all the people who when writing fast changes their handwriting, their behavior become different. Their behavior becomes kind of cocky and kind of aggressive and all. So now, how many of you are like that when you draw certain extra thing on the paper page? How many of you fill the A's and O's of the newspaper? You
you draw mustache to the heroines and ऐसे चीजें करते हैं ना, you know, इनको हीरो को कान में कुंडल पहना देते हैं, बाली पहना देते हैं, so many things, so many people, yeah. So these all things are called as doodling. तो मैं इसका आंसर दे देता हूं आपको. तो जितने भी लोग डूडल करते हैं, स्पेशली those people who do this, कि दाढ़ी बना दिया, मूछें बना दी, ए और ओ को फिल कर दिया, या ऐसे भी कुछ पेज पे बना रहे, इधर उधर बना रहे, तो जितने भी लोग डूडल करते हैं, इनकी मम्मी जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है. मम्मी इज फंटास्टिक कुक, वेरी गुड कुक, वेरी टेस्टी फूड. इनके घर में जितनी भी बेडशीट्स आती है वो बहुत सॉफ्ट और फील गुड वाली होती है. और इनकी मम्मी क्लीनिंग को लेके बहुत सेंसिटिव होती है. शी जस्ट वांट टू हैव देयर हाउस क्लीन. ये साफ सुथरा होना चाहिए, ये साफ सुथरा होना चाहिए, ये साफ सुथरा होना चाहिए. तो इट्स लाइक क्लीनिंग के लिए, खाने में और बाकी जो चीजें घर में आएगी उसके लिए वो बहुत कॉन्शियस और टेस्टफुल होती है. इतना जी समझे आपको? Yes, sir. करेक्ट है? I agree. How many of you find it correct for you? तो ये मैंने आपको खाली एनालिसिस बताया, लेकिन ये ऐसा ही क्यों होता है, ये आप मेरा जो एडवांस क्लास है जो करोगे, तो एडवांस क्लास में इसका आपको आंसर मिलेगा कि आपका ऐसे करने का और मम्मी का क्लीनिंग का क्या संबंध है ना. तो दैट इज एडवांस क्लास का लर्निंग. बट यस, वो आप वहां पे सीखोगे, अलग तरीके से आप सीखोगे. यस किरण जी, आपका क्वेश्चन है. थैंक यू सर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव है और इंटरेस्टिंग है. मुझे कब से वॉशरूम जाना है, मैं नहीं जा रही हूँ. सो ओके, विथ माय क्वेश्चंस नाउ. दो सवाल है. एक तो मेरी हैंडराइटिंग चेंज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड सेकंड है, विल यू बी एनालाइजिंग आवर सैंपल्स या चूज करोगे? सो आई विल हैव टू वेट टू बी द लकी वन. हाँ, you will have to wait for to be a lucky one. मतलब I don't know which sample will come into the analysis, but what if I want to get it analyzed? Like, okay. No. So how do I go about it? Like, the moment somebody says do mine, we avoid it. Okay, so it's entirely the nature's call कि किसका handwriting आएगा सामने, तो उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग. कल सीखेंगे कैसे एनालिसिस करना है. और पहला क्वेश्चन आपका क्या था? पहला क्वेश्चन मैं भूल गया इस चक्कर में. मेरी हैंडराइटिंग चेंज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स. So is it very common? It's a good thing, you know. Actually, it means that you have changed as a person. When your handwriting changes, it shows that you are also changing. So that is why, for the better, you know, younger you and this you has a different kind of handwriting. Okay, ठीक. अब आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग कहेंगे कि मेरा करो हैंडराइटिंग एनालिसिस, उनका 100% हम नहीं करेंगे. और जिन लोगों का वीडियोज ऑन रहेगा, जो क्वेश्चन पूछेंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे, उनके ही हैंडराइटिंग सैंपल हम कंसिडर करेंगे एनालिसिस के लिए. वो भी मेरा टीम आइडेंटिफाई करेगा. मेरा टीम मुझको कल या परसों दे देगा एंड वी विल डू द एनालिसिस. ठीक है. और यस निशा जी बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? सर वन थिंग इज आई स्पीक इन इंग्लिश. हिंदी मुझे ठीक से नहीं आता. No. Okay. My two sons, one is 16, that's okay. The older child you answered, the younger child is 13. What do I do with him? That is one thing, and I don't know what I should write. That part I missed. You said write anything. So 13 is the right age right now. 13 and 16 is almost same. You know, both of them are capable of choosing what they want to become like. You know? So it's like now, you know, asking them to learn this science is a better thing to do. If your kid is below 16, below 13, below 14, basically below 14, and if he has a lot of years of development, then you learning this and training your child is an easier thing. Now, after the 14, they should learn. They should understand what they want to become like. No, that's why I said he's 13. He's neither here nor there. No. It's like when you talk about 14. Yeah, 13. 14 is almost similar. Yeah. And what is it that we should write and send you? So write anything, you know, write like this. I am a Sachin Tendulkar. I have played India for 20 years, and just continue the story. Write like that and we will analyze that. Should I send that in WhatsApp? So we will give you link. If the link is not being given to you, the link will be given to you today. So you all should write. You should also prepare your drawing samples because we are going to analyze your drawings. तो आपकी जो ड्राइंग्स है उसको भी एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे ड्राइंग का एनालिसिस होता है.
तो हम लोग वेडनेसडे को करेंगे. वेडनेसडे वी विल डू द ड्राइंग एनालिसिस एज वेल. Okay. ठीक है. ओके. ज्योति जी, आपका क्या क्वेश्चन है? Good evening, sir. Sir, basically, I think I'm audible, sir. Yes. सर बेसिकली क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं किसी का सामने हैंडराइटिंग देखती हूँ तो बहुत जल्दी कॉपी कर लेती हूँ. ओके. और उस बीच में कभी कभी क्या होता है कि मैं लिखते लिखते उसकी की हैंडराइटिंग में लिख जाती हूँ और मेरा अपना हैंडराइटिंग रह जाता है. और जैसे मैं अभी अकेले लिख रही हूँ तो आई एम ऑन माई हैंडराइटिंग. But so don't copy while giving the handwriting sample. Then no, never copy. Think and write. All of you think and write. Now this behavior of yours, we do have the analysis for this. Okay. So it is the kind of advanced kind of learning wherein you come to know what happens with people who copy the font of other people while writing. But for in your case, you always you are hungry for learning. You are very capable of learning. You always look for an opportunity to learn from other people. Am I right or wrong? That's true. That's true. This is what it means. But why you do it? But why do you do this? For that, you will have to do the advanced course wherein we teach you which people are the one who can copy the font of other people or writing of the other people. Throughout the मतलब मेरे बचपन से है ये. हाँ, मुझको पता है. From a 8th standard, I'll do that. कि किसी का भी सामने आ गया तो बस वो वैसे ही चला जाएगा मेरे हाथ से. यस, आई नो. और उसके पीछे का रीजन भी हमको पता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा क्यों बनता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, क्यों ऐसा बनता है और कैसे उसको बदला जाता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. ये थोड़ा सा एडवांस लर्निंग में, तो आप जब एडवांस कोर्स करोगे तो उसमें हम आपको ये समझाएंगे. ठीक. थैंक यू सर. यस, अजय जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सुधीर जी नमस्कार. आपने बड़ा अच्छे से समझाया. आई एम वेरी न्यू टू दिस, फर्स्ट टाइम एवर अटेंडिंग सच काइंड ऑफ अ सेमिनार. एक बेसिक क्वेश्चन है, लेमैन क्वेश्चन. ग्राफोलॉजी से ये समझ में आ रहा है कि पर्सन्स ट्रेट, उसके बिहेवियर, उसका इनर एबिलिटीज एंड ऑल कैन बी डिटेक्टेड, राइट? यस. तो अगर हैंडराइटिंग से डिटेक्ट हो गया और उसके बाद बेस्ड ऑन दैट इफ समबडी वर्क्स ऑन द हैंडराइटिंग एंड चेंज फॉर ए गुड फॉर हिम, तो क्या उसका इनर पर्सनालिटी टाइप एंड एवरीथिंग विल चेंज? The answer is yes. Okay. So handwriting or the graphology is a karmic science. So it is not talking about your future, it is not talking about your past, it is talking about your present. So if in the present, for example, if I come to know from my handwriting, okay, I'm this kind of person, and if I want to change, I can change my handwriting and I can become a different person. If you talk about me, I have done this in my life. In the year of how many of you know the place called as Gadchiroli in the Maharashtra? It is very famous for Naxalites. Yes. Okay, so I belong to that district. And this is my second generation who has come out of the jungle. So my dadi never used to wear the blouse and all, you know. So that kind of family I have. So my father is the one who got out of the jungle first, and he became a road construction worker. You know, he used to have this murum and other things which he used to put on the road and all. तो रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर थे. वहां से मैं मतलब उन्होंने मुझको ट्रेन किया, कुछ किया, तो मेरे पास इतना ना करेज था, ना इतना एबिलिटी था, कुछ भी नहीं था मेरे पास. तो 2006 में मैंने ग्राफोलॉजी सीखा, 2006. और जब मैंने ग्राफोलॉजी सीखा तब मैंने देखा कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना फाइटिंग स्पिरिट है, ना कॉन्फिडेंस है, ना करेज है, ना ये है, ना वो है. सो मेनी थिंग्स वर एब्सेंट. देन आई डिड समथिंग विद माय हैंडराइटिंग. तो मैंने कुछ चीजें जो है हैंडराइटिंग में बदली. सबसे पहली चीज जो मैंने हैंडराइटिंग में मेरे बदली थी वो था करेज. तो सबसे ज्यादा मैंने डाला करेज. उसके बाद मैंने डाला एबिलिटी टू टेक मासिव एक्शंस. उसके बाद मैंने काम किया मेरे कॉन्फिडेंस के ऊपर. उसके बाद मैंने काम किया मेरी एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव, मतलब चीजों को करने की क्षमता, या फिर चीजों को नई चीजों को स्टार्ट करने की क्षमता. तो उन चीजों पे मैंने काम किया. तो 2006 से 2009 मैंने कंटिन्यूअसली मेरे खुद के ऊपर काम किया और मैं बदल गया. जब मैंने बदला तो मैंने मेरा जॉब छोड़ा, मैंने बिजनेस चालू किया. और बिजनेस में मैंने करीबन था 8 साल हार्डकोर बिजनेस. 2009 टू 2018 हार्डकोर बिजनेस मैंने किया. और उस बिजनेस में मैंने मतलब 8-10 तरह के बिजनेसेस किए.
विदाउट हैविंग एनी मनी इन द अकाउंट, और कुछ भी नहीं था मेरे पास, और पापा का सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं। तो ये करने का जो करेज है, और 2018 में मैंने ये फुल टाइम चालू किया, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट दैट ओके कि ग्राफोलॉजी ने मेरी लाइफ बदली है, ग्राफोलॉजी के कारण मेरे लाइफ में इतना सब कुछ अचीव किया है, और यही चीज मैं सोसाइटी को वापस देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ग्राफोलॉजी से लोग अपनी लाइफ को बदले, अपने जिंदगी में अलग तरह का काम कर पाए। तो उसको वापस देने के लिए मैंने 2018 में इसको फुल टाइम सिखाना चालू किया। तो मैंने मेरी लाइफ बदली हुई है, आप भी सभी लोग भी बदल सकते हो। इट्स अ वेरी द बेस्ट थिंग अबाउट ग्राफोलॉजी इज इट टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट टू बी चेंज्ड, क्या बदलना चाहिए। 2-3 चीजें बदलना है, पूरी 100 नहीं बदलनी है। 2-3 चीजें बदल के भी आप लाइफ की सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो। यस अजय जी। One more question related to this only, extension of this. These days मतलब आजकल लिखते बहुत कम हैं। ओके। लिखने में आता ही नहीं है कुछ भी। मतलब आज आपने बोला तो आई थॉट कि मतलब मैं आफ्टर से 2 or 3 years आई एम राइटिंग समथिंग। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, फॉर्म्स भी भरना हो तो ऑनलाइन भरे जाते हैं किसी भी चीज के, एंड देयर इज नथिंग, ईमेल्स लिखते हैं एंड एवरीथिंग। मैं आंसर देता हूँ उसका। तो इनका कहना है कि आजकल तो यार लिखता कौन है, सब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ईमेल पे करते हैं, देयर इज नो वन हु इज राइटिंग मच, यू नो। हाउ मेनी ऑफ यू दिस क्वेरी, ये सही क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू फील राइट। तो इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा लिखना क्या है। लिखने का मतलब होता है कमिटमेंट। जब भी आप लिखते हो तो आप 3 लेवल पे कमिटेड हो जाते हो। इसलिए जो लोग लिखते नहीं है उनका कमिटमेंट का लेवल कम हो जाता है। उनका एक्सप्रेशन, राइटिंग इज एक्सप्रेशन राइट, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर थॉट्स। तो जब लिखेगा नहीं तो एक्सप्रेशन भी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। इसलिए जितने भी लोग, सबसे ज्यादा कौन सी फील्ड में अकॉर्डिंग टू यू ऑल, सबसे ज्यादा कौन सी फील्ड में लिखने का काम सबसे कम होता है? Which field people use most the laptops, computers and mobile? Which field? It is IT and computers, right? IT and computer या सॉफ्टवेयर उसी इंडस्ट्री में होता है। तो जैसे ही लोगों का लिखना कम हो जाएगा, लोगों का राइटिंग कम हो जाएगा, लोगों का एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो किस में होगा? इसका मैनिफेस्टेशन होता है लैक ऑफ कमिटमेंट इन दी रिलेशनशिप। इसलिए सॉफ्टवेयर के लोग सबसे ज्यादा लिविंग रिलेशनशिप में कंफर्टेबली जाते हैं। वो लोग जो कंप्यूटर के साथ ज्यादा, कंप्यूटर इज अ इनह्यूमन थिंग। तो कंप्यूटर का कैसा है, आपने ए दबाया तो स्क्रीन पे क्या आता है? ए आता है। आप घर पे कभी बीवी को पानी मांग के देखो, मतलब पानी दो, तो ये बोलती है जाके उठ के ले लो, तो उधर रिस्पॉन्स अलग आता है राइट। उधर वही रिस्पॉन्स नहीं आता जो आप उम्मीद करते हो, क्योंकि वो इनह्यूमन है कंप्यूटर, लेकिन वो ह्यूमन है। तो जब आप ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हो तो थिंग्स आर डिफरेंट। तो जब आप कंप्यूटर से ज्यादा काम करोगे तो आप भी इन्ह्यूमन हो जाओगे, आपका अटैचमेंट लेवल कम हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन का लेवल कम हो जाएगा। इसीलिए सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट्स है, सबसे ज्यादा अफेयर्स होते हैं, सबसे ज्यादा लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। और वहीं पे कई सारे लोग, मैं हाल फिलहाल ऐसे मिल रहा हूं जहां पे द पीपल आर नॉट वांटिंग अ किड, वो कहते हैं मुझको हमारी लाइफ एंजॉय करनी है, हमको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। तो ये सभी चीजें जो हो रही है वो ना लिखने के कारण हो रही है। तो आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अगर आप लोग इस फील्ड में काम कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि यू आर राइटिंग एवरी सिंगल डे एटलीस्ट 4 to 5 लाइंस आपने हर रोज लिखनी ही चाहिए। ये आपका एक्सप्रेशन, कमिटमेंट, इन सब चीजों में बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, ओके। यस, जिनिम मैथ्यूज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? I believe that I have pronounced your name correctly. That's all right. It's Jinan. Thank you so much, sir. Thank you for this opportunity. My question here is, so I love writing. Okay. So I am from the IT industry. Okay. I'm a communication trainer myself. However, so this COVID situation has made life very uncomfortable, because I would be more comfortable training with a whiteboard than training on a whiteboard on the computer, because that's not something you tell me to write, I can put pen down my thoughts easily, but you tell me to type the same thing, I will kind of hesitate on that. So talking about my penning side of it, I wanted to know, so I have this habit of using colors when I write. So even if you see my desk right now, I have a red, I have a blue, to everything that I write, like if it's a heading, I will put it in, I put it in a red, or if it's something important, I put it in a green. Sorry for this, but
this is a kind of advanced level question. This will be covered in the advanced course. So, so I won't be able to answer this right now. But we have answered this in the advanced course. So, yeah, there are some people who have tendency to write with the one ink, like only black, only blue, only green, only red. So it also has a meaning. If I have to analyze this, I will just use one sentence only. You would always like to make sure that people are getting the right knowledge. You will make sure all of the time, okay, this is the right knowledge and don't miss this, don't miss this. So you will make sure that people are, so that is what you will do. Correct? Yes, true. And one more question to add to this. So, even if I go anywhere and I have to fill in a form, okay, I will never use the pen that they give me. I will always use the pen I have. Does that signify anything? As in, yeah, it signifies that you are very good as you are very good as an administrator. Okay. So you will be able to manage people very well. All right. Okay. Thank you so much. Yes or no? Yes. For the matter of fact, when you answered somebody's question prior to this, about telling them that your mother is a good cook and has this. So I see my daughter, she has the doodling habit, and I have all the other traits in me. So it was, I always thought that it was just because she suffers of ADHD. So I thought it has something to do with that. But today my concept is much clearer. No, that your concept, you just know the analysis now. I'm going to make it. So you all know the analysis now. Okay, this has been this and that, but what is the mindset behind it? That is the crux, So knowing and learning about the mindset is the graphology. So when you know the mindset, then you know how to use it for your advantage. How to program you don't know whether this program of your kid is good or bad, right? How many of you are confused now? Doodling is good or bad? Now that answer will be in the advanced course. Yes, Vaishali, what is your question? Thank you, sir, for giving the opportunity. Sir, मेरा एक habit, मतलब बचपन में I used to write from left hand. तो parents ने फिर बाद में शायद right से करा दिया. लेकिन ये है कि बाकी activities चाहे duster से rub करना या फिर erase करना, that is still left hand. Brushing is also left hand. उसमें ना ऐसे में I have answered this in the advanced course again. These are, you guys are asking me advanced course questions. इसमें थोड़ा सा time waste होगा और आपको analysis पता चलेगा लेकिन उसका mindset नहीं पता चलेगा, है ना? ठीक है, but it kind of creates a problem with the stomach. तो जो है ना, yes, especially you want to share? मुझे है problems digestion का, abdomen issues I have had since 4-5 years से ज़्यादा हो गया है. I know. तो इसका cure भी है advanced course. ठीक है. सर ऐसा तो नहीं लेफ्ट से चालू कर देगा लिखना? नहीं, क्योर अलग तरह का है. ठीक है. ओके, ठीक है, थैंक यू. तो आप सभी लोग थोड़ा सा एडवांस कोर्स के क्वेश्चंस बंद करो और जो हमने सीखा है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछो. तो हम क्या सबका लर्निंग हुआ, इसमें क्या है, मेरा स्किल्स टेस्ट हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, जो प्रश्न पूछता है उसको मजा आ रहा है, वो करेक्ट है, बट नो लर्निंग इज हैपनिंग, है ना. आपका शायद वो डाउट जो है वो क्लियर नहीं होगा. ज्योति जी, किरण जी, आपका क्वेश्चन. आपका कैमरा भी ऑफ है. So, आपका नाम, yes, आपका क्वेश्चन हो गया, but I wanted to ask अभी आज के बारे में जो था. So this page thing which you explained to us about left, right, top and bottom, how is it going to help in analysis? Tomorrow we will learn that tomorrow. तो आज तो हमने बेसिक दिया है, तो आज का कुछ कंफ्यूजन है तो yes, रितु जी, what is your question? Sir, thank you for a lovely session and salute to your father and to you, who were who could bring a revolutionary change in your life. And sir, I want to say something. I hate handwriting. I mean, I just hate writing because my handwriting is just getting deteriorated day by day. And कभी मतलब check भी sign करना होता है तो मैं पहले एक बार practice करती हूँ कि मेरा ठीक वापस आएगा कि नहीं आएगा. Question क्या है? What is your question? तो सर मतलब I am very scared of writing. ठीक है. I don't enjoy writing. I appreciate others' good handwriting. I wish I also can write something like that, but I'm very scared of writing. ठीक है, इसका आंसर है, बट अभी मैं रुक जाता हूँ क्योंकि ना अभी मतलब सब लोग ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं जो पर्सनलाइज है.
हम लोग ना जब आप एडवांस कोर्स करोगे तो एडवांस कोर्स में आप पूछो, मैं बताऊंगा कि ऐसा क्या होता है और उसका क्या इलाज है। शालिका जी, आपका क्वेश्चन है? सर वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन तो मेरा दूसरा था बट आई डोंट नो अभी आप आंसर करोगे या नहीं। इट वाज लाइक कि जब मैं लिखती हूँ तो माय फॉन्ट्स आर डिफरेंट, कुछ कर्सिव में जाते हैं, कुछ टेक्स्ट में जाते हैं, ये एडवांस फिर लेवल लिखते क्वेश्चन है। लिखते है ना कुछ कुछ उड़ते हैं। तो शालिका जी, कमिंग एडवांस बैक टू एडवांस द लेवल क्वेश्चन। So it is so there. my next question is that yeah, it is like कि जैसे आपने बोला कि 0 to 7 में मदर का इम्पैक्ट रहता है, then it becomes father's more. So my son is exactly at 7 now, growing up to father's wala side. So how can I contribute, in making him more of a good human being? Because By अभी जब learning the science which we are teaching, learning it fully, you will come to know which kind of programs you can install in your kids mind by doing certain things. तो जो आप चीजें करोगे उसके हिसाब से उसका माइंड जो है डेवलप होते जाएगा। उसके लिए आपको प्रोग्राम, जैसे कल भी हम सीखेंगे ना, तो कल कुछ प्रोग्रामिंग सीखेंगे, परसों कुछ सीखेंगे, तो वी विल लर्निंग लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, so you all can use those programs, है ना। तो हम कल सीखेंगे वैसे प्रोग्रामिंग कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू। यस नरेश जी, आपका क्या क्वेश्चन है? नरेश चंद्र भारद्वाज, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? Can you unmute? Naresh ji is mute again. Yes. Well, I am 70 plus, but still I like to be a student, and I'm in the habit of learning everything whatever comes through. But my question is whether I will be able to handle those problems which I'm just passing through at this age, even through this. So knowing is the power, knowledge is the power. So knowing what is happening to you, knowing the way you are going to react to the situations is also power. So I don't know whether you will be able to change much or not, but just by being aware what is happening, you will be having a lot of relaxations in your situation, or ease out or way out in your situation. Awareness, it will give you huge and high level of awareness. I will be able to guide others also, my grandchildren and all that. Yeah, you will be able to program your grandchildren in a better way. Then it's like a huge plus. Grandchildren, so many things. Okay, thank you. ओके, जिन्होंने प्रश्न पूछा अपने हाथ नीचे कर देंगे। मुझको अभी कंफ्यूज हो रहा है कि किनका हुआ है किनका नहीं हुआ। यस अंजलिका जी, आपका क्वेश्चन है? Good evening and thank you. I have a couple of questions actually. I have a son who's almost 7.5 years now. He doesn't like to write, and I always, insist on him writing, because nowadays in schools also, I mean, of course in the school they do have writing to an extent, but a lot of other parents, like, as you said, that many people don't write. I keep telling him to write. First and the foremost thing, he doesn't like to write. And after he writes also, he puts a lot of pressure on the page. I keep telling him that you need to hold the pencil at the right, spot. Your question is what? So, no, how do I first and the foremost thing instill that habit of writing? And despite my telling him, he puts a lot of pressure. So whether the pressure is good or bad, next page also. The question is, what do you think? Putting a higher pressure on the page is good or bad? I don't think it's good, because a lighter hand is always, that is my understanding, that a lighter hand is always good, because uska impression next page par bhi aa jata hai. Wait a minute. So you all are not trained, or you are not expert in this. So your judgment of pressure or slant or the size or the strokes is not the correct. So whether pressure is good or bad, you don't know. So it's it's like you are trying to give some medicine to your kid under impression that that this medicine is good, which is your choice. Again, it's not being recommended by the doctor. That is dangerous, right? So you need to get him to the right doctor. And first of all, kids 7 years, 6 years, 8 years, 10 years, let them grow. There are ways to program them. Don't focus on the writing and all. They will learn those things on their own.
So there are ways in which you can program them, those ways you need to learn. You see, my wife complains that my daughter is not good with the maths or not good with the studies. You know what is my answer? She's exactly like you. So you cannot complain, no. जो आप नहीं हो वो आप अपने बच्चे से उम्मीद कर रहे हो, कितना गलत है, वेरी रॉन्ग. अगर वो अच्छा करता है तो आपका नसीब, नहीं अच्छा करता है तो आपका ही कर्म है ना फिर वो. तो देयर आर वेज इन विच यू नीड टू, मैंने बोला ना, ये जो साइंस आप सीखने वाले हो, आपके चाइल्ड को कैसे बड़ा करना है, उसमें कैसे वो राइट बिलीफ इंस्टॉल करने हैं, कैसे वो आपकी चीजों को मना नहीं करेगा, क्यों वो आपकी चीजों को करेगा, वो सभी चीजें इसमें आप सीखने वाले हो. तो वो सीखो. आप अपने मन मर्जी कुछ मत करो कि इसका प्रेशर ज्यादा है उसको कम करो, ये कम करो, वो नो. First understand what is pressure, what is the meaning of pressure, what is the meaning of high pressure, what is the meaning of light pressure. Learn all those things and then advise, then advocate. Directly अभी मत करो, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग हैं, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि फिर मैंने उनके क्वेश्चंस हैंडल नहीं किए. जिनका हुआ है वो हाथ नीचे करेंगे प्लीज, बिकॉज आई सी सो मेनी फेसेस ऑलरेडी बीन डन. यस आदिश जी, आपका क्या क्वेश्चन है? आदेश और आदिश, आई डोंट नो. Yes, sir. Thank you so much, sir. Am I audible? Yes. Okay, thank you, sir. My question is, I'm an actor. Okay, and will graphology or will it help me to shape up my career, or will it help me in because right now I don't have that much money. I don't have that much. Adish, the answer is yes. If you want to build a career as an actor, it's very easy. There are very easy remedies because of which people will love you when you will perform on the camera or on the stage. So there are remedies for actor, for a businessman, for the person who wants to have promotion in the job, the people who want to grow their salary, their confidence, their stage performance. There are easy remedies. Graphology will definitely help you. Okay. Frankly speaking, I am very much ambitious. I just don't want to be only in acting. I want to do many things in my life. Like I just want to be flourish in business as well as a businessman. So as you said that you should not use graphology more than 2 or 3 ways. No, what I mean to say, only by, see, let me answer you this question. Now, all of you want to grow in your life, right? By changing the handwriting and signature. Am I right? Or how many of you are like that? कि मेरे को handwriting बदलना है, signature बदलना है, grow करना है, right? All of you are who are sitting over here right now. Are you not successful right now? क्या आप लोग किसी एक लेवल पे भी सक्सेसफुल नहीं हो? You are successful. Am I right or wrong? आप अपनी एज में 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 के हो, 32 के हो, कुछ तो सक्सेस मिला ही आपको. मतलब वहां पे कुछ चीजें जो आपके राइटिंग में है वो आपको सक्सेस कंट्रीब्यूट कर ही रही है. सो देयर इज नो पॉइंट इन चेंजिंग एवरीथिंग. व्हाट आई विल हैव टू डू, आई विल हैव टू गिव यू सम इनपुट्स, स्पेसिफिक इनपुट्स थ्रू व्हिच यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ इन अ बिग वे. उसमें मैं आपको 100% चेंज करने जाऊंगा तो आप नए बन जाओगे पूरे के पूरे, और पूरे के पूरे नए बनोगे तो वापस से आपको सभी तरीके सीखने पड़ेंगे. इट्स लाइक इमेजिन दिस दैट यू हैव अ बैड मोटरसाइकिल, आपके मोटरसाइकिल का ब्रेक अच्छे से नहीं लगता, तो क्या आप वो मोटरसाइकिल ड्राइव करना नहीं सीखते हो? आप सीख जाते हो, करेक्ट? तो उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ आपको उसके ब्रेक को थोड़ा सा और बेहतर करके देना है, और उसका हो सकता है एक्सीलरेटर बढ़ा के देना है. 2 चीजें होगी आपका, आपने तो सीख ही लिया उसको कैसे बैलेंस करना है. अब मैं आपको पूरी की पूरी नई मोटरसाइकिल दे दूंगा तो आपको उसको मास्टर करने के लिए और 10 साल लगेंगे ना. तो आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ चेंजिंग ऑल द हैंडराइटिंग एट वन गो. I am in support of changing few traits of your handwriting so that it will manifest in big way in your life. तो हमारा जो ग्राफोलॉजी है, हम जो सिखाते हैं, हम उस लेवल पे आपको सिखाते हैं कि 2 से 3 चीजें ही आपको बदलनी है, उसके बावजूद आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे. तो एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, जॉब पीपल, हाउसवाइफ, वेरी वेरी इजी रेमेडीज. बहुत सिंपल है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज. इनफैक्ट अभी हम कुछ एक्ट्रेस से अभी मिले थे, एक्ट्रेसेस से मिले थे, वो अपने फोटोज देख रहेंगे सोशल मीडिया पे. तो उन एक्ट्रेसेस का अभी हम लोग काम करने वाले, जहाँ पे देयर सैलरी विल इंक्रीज, देयर परफॉर्मेंस विल बी बेटर, पीपल विल स्टार्ट
रिकॉग्नाइजिंग देम मच, वो रिकॉग्निशन मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा. इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट. ठीक है आदित्य जी, आपका आई बिलीव योर आंसर, क्वेश्चन आंसर. Yes, sir. Thank you. Thank you. ओके. अभी काफी सारे ऐसे, तो मुझको लग रहा है अभी कि मुझको घर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा. ओके, so can you all put down your hands, especially those who have already asked the questions. Okay, yes, Preeti ji, आपका क्या क्वेश्चन है? प्रीति पीछा, what is your question? सर, आई एम अ होम्योपैथ, और मैं जब अपने पेशेंट्स को जब पेशेंट्स आते हैं, जब वो बात नहीं कर पाते खुल के, तो मैं उन्हें इधर कुछ उनके मन में जो है वो लिखने के लिए बोलती हूँ या डूडल करने के लिए बोलती हूँ. तो मैंने ये कोर्स बेसिकली इसीलिए ज्वाइन किया कि मैं अपने पेशेंट्स को और साथ साथ खुद को भी अच्छे से समझ सकूं. तो ये होम्योपैथ और ये कोर्स जो है ना वो पैरेलल है. मतलब हम भी माइंड की बातें करते हैं और माइंड से सब चीजें निकाल के लाते हैं, और होम्योपैथी में आप यही करते हो, इसके थॉट्स पकड़ते हो, उसके थॉट्स का रूट कॉज पकड़ते हो, राइट. तो काफी सारे होम्योपैथ जो है उनको ये कोर्स करके बहुत फायदा होता है, क्योंकि उनको वो रूट कॉज पता चल जाता है, जो बात करने के बाद पता चलने वाला वो लिखावट से ही पता चल जाता है. ओके, या तो मुझे इतना, लेकिन अभी अगर बच्चा है जो मुझे लगा कि ये इसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जब मैंने डूडल करने के लिए बोला तो उसने डोरेमोन ड्रॉ किया, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ ऐसा, ये तो एग्जांपल मैं पूछ रही हूँ. तो ये जो चीजें आप पूछ रहे हो मोस्टली एडवांस लेवल की है, जो हमने आज सीखा उससे संबंधित प्रश्न पूछोगे तो इट विल बी इजी फॉर मी टू एनालाइज और बताएं, है ना. और कौन है? ओके, यस पूजा जी, आपका क्या क्वेश्चन? आपका हो गया पूजा जी, आपका क्वेश्चन पूजा जैन. ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन? ओके, आपने सबसे पहले एक जब स्टार्ट किया था आपने शेप ड्रॉ करने कहा था. तो सॉरी, ये लिखने को कहा था? नहीं, शेप्स ड्रॉ करने भी कहा था आपने कि सिंपल शेप्स ड्रॉ कीजिए. एंड अरे नहीं, ए आपने कहा था, ए की ड्रॉ नहीं करा था, मैं जस्ट इमेजिन करने को कहा था. इमेजिन करने को कहा था. एंड आपने फिर उसमें ये भी कहा कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल नहीं करना. एंड देन यू सेड लेटर ऑन दैट आपने शेप का आपने इस तरह से एक्शन किया था. बट व्हेन आई वाज डूइंग द एक्टिविटी मैंने आपकी तरफ देखा नहीं था, बट स्टिल आई ड्रू द सेम थिंग, सर्कल एंड ट्रायंगल, बिकॉज द रीजन ऑल्सो शायद मेरा आवाज बहुत पावरफुल था. हो सकता है, could be the reason, but then मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, बिकॉज आपने कहा कि सिंपल शेप्स बनाइए, तो प्रॉब्ली इमीडिएट जो शेप्स रिकलेक्ट होते हैं एज सिंपल शेप्स आर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल. सो इज देयर एन एनालिसिस ऑन दिस इट्स आल्सो? नहीं, ये सिंपल है कि हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज में काम करते हैं, तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि सबका आंसर सिमिलर है ताकि आप समझो इस पॉइंट को. और आप सीखते हो बचपन से लेकर अब तक, जो भी आपने सीखा है सिंबॉलिक वैसे ही सीखा है. इसलिए आप देखो आपके बच्चे जो आप बोलते हो वो नहीं सीखते, लेकिन जो आप करते हो पक्का सीखते हैं. करेक्ट? ओके. तो यही तरीका है आपका माइंड सिर्फ इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सभी से पूछूं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2 सिंपल शेप्स नाउ, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं बोलता हूँ तो ये सिंबल मैंने, अगर 2 सिंबल मैंने ड्रॉ किए सभी लोगों के लिए. ओके, और अगर मैं आपको पूछता हूं कि इन 2 शेप्स में कौन मेल है और कौन फीमेल है, तो आप क्या कहोगे? ये एक शेप होगा और दूसरा जो है वो शेप होगा जहां पे मैं मेरा ड्राइंग काफी अच्छा है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लो. अच्छा, ये मैंने 2 शेप्स ड्रॉ किए और आपको मैं पूछता हूं अभी कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो इसको मैं नंबर 1 दूंगा और नंबर 2 दूंगा. तो व्हाट डू यू थिंक? 1 is female and 2nd is male. Okay, 1 is female, 2nd is male. क्यों? Because एक इमीडिएट जो रिएक्शन होता है या इमीडिएट जो विजुअलाइजेशन ये होता है कि द फीमेल बॉडी इज ऑलवेज अ कर्विश बॉडी, करेक्ट, whereas a male body is a straight body is what we visualize. तो ये आपको किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया. That's just a visualization. हाँ, तो ये लैंग्वेज ऑफ सिंबल है. तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज आप हर जगह पे बचपन से लेकर अब तक वही एक तरीका है जिससे आप सीखते हो, विजुअलाइजेशन और विजुअल थिंग्स, है ना. सिंबल तो सिंबॉलिक वे से ही होता है, तो वो वही एक तरीका था आपको समझाने का.
ओके एंड किसी ने यहाँ पे आई थिंक अजय जी ने एक क्वेश्चन बोला था कि हम लोग आजकल मेजरली टाइपिंग करते हैं या लैपटॉप पे होते हैं एंड ऑल, सो वी टेंड टू डू दिस विद आवर चिल्ड्रन आल्सो। आज बच्चे जो हैं वो मेजरली टाइप कर रहे हैं, मेजरली सब कुछ, राइटिंग बहुत कम हो गई है एंड वी आल्सो थिंक कि हम उनको राइटिंग करने की क्या जरूरत है, बिकॉज कल जब वो मैंने आपको बता दिया ना क्यों जरूरत है ना, यू नो नाउ, इट्स वेरी नहीं दैट वी नो, बट देन अब जैसे वो उन चीजों में वो ट्यून हो चुके हैं तो उनको राइटिंग बोलो तो देन इट बिकम्स लाइक मम्मी क्यों। पूजा जी कुछ चीजें ऐसी है लाइफ में जो आपको फिजिकली ही करनी पड़ेगी। जैसे शादी करनी है तो देन यू हाउ टू बी फिजिकल, नो यू कैन नॉट डू मैरिज ऑनलाइन और फिर ऑनलाइन ही सब संसार करे, ऐसे तो नहीं होगा। तो वैसे राइटिंग भी उसी एक कटघरे में आता है कि राइटिंग को भी आपको फिजिकली करना पड़ेगा टू हैव द फुल बेनिफिट ऑफ लाइफ। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्टिविटी, यू ऑल मस्ट डू इट, है ना। आप भी आपने भी। यस नीता जी, आपका क्वेश्चन, नीता सयानी। तो आप तो हमसे जबरदस्ती इंटेलिजेंट करवाते हो खुद को। नीता सयानी, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? Yes, sir. Good evening, sir. So I would like to ask one question. मेरे आई एम टीचिंग एनजीओ में सिखाती हूँ। काफी बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते लेकिन लिख के देते हैं, बट लिखने में भी उनकी मिस्टेक्स होती है। बट इफ यू सी द हैंड राइटिंग इट इज वेरी गुड, टचिंग द लाइन सब है। काफी मिस्टेक्स भी होती है हैंड राइटिंग, कभी कैपिटल आ जाती है, कभी स्मॉल लेटर आ जाती है। So how would I make that children proper in this? So you will have Because to I learn want this them to go forward. मुझे Exactly. ये चाहिए कि that underprivileged children है that they should go forward, society तो में आगे बढ़े। उसके लिए तो राइट डिसीजन आपने लिया है, एक स्टेप 1 तो आपने लिया है, एटलीस्ट आपने 3 दिन का बेसिक वर्कशॉप तो आप कर रहे हो। लेकिन अगर आपको सच में उनको हेल्प करना है तो यू हैव टू डू एडवांस लेवल ऑफ ग्राफोलॉजी, जहाँ पे आपको पूरा नॉलेज रहे ताकि आप उसकी मदद कर पाओ। हम जो कोर्स सिखाते हैं उस कोर्स में वी मेक श्योर दैट यू आर एक्सपर्ट इन दिस एरिया। एक्सपर्ट मतलब आप दूसरों की मदद कर पाओगे, दूसरों की लाइफ को बदल पाओगे, खुद की लाइफ को बदल पाओगे, बच्चों को हेल्प कर पाओगे, बड़ों को हेल्प कर पाओगे। अगर आपने हमारे ऑलरेडी टेस्टिमोनियल्स भी देखे हैं तो सभी जो लोग हैं, मतलब एट द एज ऑफ 61 आल्सो पीपल हैव लर्नड द साइंस फ्रॉम अस एंड दे हैव स्टार्टेड अर्निंग टू दिस साइंस, दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड देम। तो ये आप करिए। Yes, sir. I don't want to earn, but I want to उनको आगे बढ़ा, just like how you came out. मुझे भी वैसे चाहिए कि बच्चे भी बाहर आए and they shine in the society. It's easy to do, बहुत इजी है। आपको खाली वो प्रोग्राम सही तरीके से इंस्टॉल करना है उनके माइंड में और बच्चे वो लेवल पे चले जाएंगे जिस लेवल पे आप चाहते हैं। I'll do that, sir. Promise. Thank you. इस प्रकाश जी, आपका क्या क्वेश्चन है? प्रकाश उत्तम चंदानी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा ये क्वेश्चन था, ये जैसा ग्राफोलॉजी है ऐसे बहुत सारी साइंस है जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तो इससे एक सिग्नेचर के थ्रू अभी वो पैटर्न तो चलो आपने बोला हम लोग रीड कर सकते हैं उनके माइंड में क्या है, लेकिन हम लोग उनका कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं या तो फ्यूचर चेंज करने के लिए उनको रेमेडीज प्रोवाइड कर सकते हैं? आगे किस वे में बहुत अच्छा प्रश्न काम है में आ इनका सकता है ग्राफोलॉजी? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर पाएंगे, क्या फ्यूचर को बदल पाएंगे। तो व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर इज वन पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 1000 पॉसिबिलिटीज, दैट इज द फ्यूचर। नाउ यू हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ हैंडराइटिंग, इफ दिस इज द हैंडराइटिंग, दिस इज द फ्यूचर, guaranteed. It is a mathematical equation, but you know what, you can always change your handwriting. It means what? You can always change your future. So if you talk about numerology, astrology and other occult sciences, even astrology talks about the writing. You know what, how many of you understand astrology by any chance? Astrology समझते आप लोग? समझते? So in astrology, writing comes in the Upachya Bhava, that is the 3rd house of Kundali. What it means? It means that you can change it, you can work on it, and you can and you can have a different outcomes in your life. So even in astrology talks about you can change your future by changing your handwriting. Okay, so yes, you can predict, but it can change all the time. So what we do, we don't predict much, but we make sure that we tell them their past. Telling past is very easy. Predicting future has no value because nobody has seen it. तुम्हारा कल ये हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता है ना। तो and again all these sciences, these
यू नीड टू परफॉर्म कर्मा. अगर कुंडली में ये भी लिखा है कि तुमको पैसे मिलने वाले, तो भी तुमको कंपनी में जाओगे तो मिलेंगे, घर बैठे नहीं मिलेंगे ना. तो कर्मिक है, और दिस इज अल्टीमेट कार्मिक साइंस. दिस साइंस इज अल्टीमेट कार्मिक साइंस. तो कर्म करने का, क्या कर्म करने का, कैसे करने का, कर्म के लेवल को कैसे बढ़ाने का, ये सभी चीजें ग्राफोलॉजी सिखाता है. हाउ टू अपलिफ्ट द कर्मास टू द हाईएस्ट लेवल, दैट इज द ग्राफोलॉजी. यस पल्लव जी, आपका क्वेश्चन है? Yeah, good evening, very good evening. Like, sorry, I missed half of the classes like now, but I just want to know, like, see, my son, he writes very small handwritings. Though I'm trying to improve it, I'm not being able to do. Pallavi ji, you don't know whether the small writing is good or bad. So what are you trying to improve? Are you trying to make your kid good, or are you trying to make See, it bad? from a simple point of view, like, na, I see when somebody writes very small, the teacher finds it very difficult to read. So it's a teacher's That's how I problem. feel. You need to change the teachers. Why are you changing the kid? And same way, like, now, I'm not What you can able do, to. Pallavi ji? You can give them magnifying glass. That will help. Don't change your kid. Change the teacher. And another thing, like, na, like another thing, I would like to talk about my habit. Like, I cannot use the pen with the cover. I cannot write. When I use the pen with the cover on it, I cannot write. So does it signify anything? Yeah, it signifies that you. It signifies that you will always like to commit what you can do. You don't like to do extra commitments. You don't like to have pressure of extra commitments. Yes or no? Okay. Thank you, sir. Yes or no? Yeah, Pallavi? of course, yes. So yes or no, Of course, हमेशा बोलना yes. है. And like, I would really go ahead with the course actually. Let's see. So tomorrow I will explain you the way we conduct and all today. I'll ensure that I join by 7 o'clock. Yes, great. Yes, Ravi Gadkar ji, आपका क्या question है? You are unmute, but your mic is not working. You need to change, unplug the mic, I guess. Yeah. You are audible. Hello. Can you hear me, sir? Yes. I am audible. Yes. One second. Actually, I could not able to join that time. I had a meeting, so You will be getting a recording today. The recording will be provided. Yeah, that's one thing I just wanted to know. And second thing, I'm a network marketer, sir. I do network marketing. So as a part time. So will it help me to build my team, sir? If I learn. Yes. Answer is yes. And one more thing, my writing is very bad. Even my writing, so many times I try to improve my writing, but I'm not able to. Bad or good, that decision is not up to you. That decision is up to me. It's like expert. The person who knows what is the meaning of that writing, that person will only tell you that whether it's a good handwriting or bad handwriting. Right. आपको मतलब आपको दिखने के लिए बुरा दिख रहा है, दिखने के लिए अच्छा दिख रहा है, उसका भी कुछ फायदा नहीं है. It has to have a right formations to have a right outcome. Okay, so don't worry. ठीक है सर. मिथुन जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मिथुन इज आवर स्टूडेंट ऑलरेडी. मिथुन जी जो है काफी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए, काफी सारे सेशंस वो कर चुके हैं. यस, आप अनम्यूट करो. यस सर, नमस्कार सर. सर मेरा क्वेश्चन सेशन में क्या कर रहे हो? और चलो ठीक है, पूछो. हर चीज में कर रहा हूँ सर, आपके साथ हमेशा से जुड़ा हूँ सर. मेरा क्वेश्चन ये है सर, किसी को बैड हैबिट है जैसे सट्टा खेलने की, जुआ खेलने की, तो उससे भी हैंडराइटिंग से उसको भी सुधार सकते हैं क्या सर? अगर वो इंसान चाहेगा तो. ये जैसे कि मैंने कहा, ये कार्मिक साइंस है, तो कर्म करने पड़ेंगे. बिना कर्म के तो होगा नहीं, लिखना पड़ेगा. अगर उसकी इच्छा है तो ये रिमूव हो सकता है, इच्छा नहीं है तो रिमूव नहीं कर सकते. बिकॉज ये जो ताला है वो अंदर से टूटने वाला है. ये जो डोर है वो अंदर से ओपन होने वाला है. तो यू कैन नॉट चेंज, बट इफ ही वांट्स टू चेंज, यस वी कैन डेफिनेटली डू इट. ठीक है सर. और एक क्वेश्चन सर, आपका नेक्स्ट जो कोर्स है इसका एडवांस लेवल का, तो उसका नाम क्या है सर प्लीज? उसका नाम है हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर मास्टर. ओके, थैंक यू सर. So you are there in the grand master as well, right? Yes, both. I am in both. Yeah, so you are there in the master as well, no? आपने join किया ना master? Yes sir. Okay, thank you. ठीक है, thank you sir. राकेश जी, आपका क्या क्वेश्चन है? राकेश चक्रवर्ती, can you switch on your video? Hello. Yes, Rakesh.
Yeah, one question you spoke about male and female 0 and 1. Now, is male and female, but you also said male and female are gender agnostic. Okay. So the question is, how do we know whether which side are we partial to, our male side or a female side? That you will And come therefore, to very, very comfortably from the handwriting. You will come to know. So this is a feminine programming. This is a masculine programming. This is a male program. This is a female program. So when we learn tomorrow we will see, okay, which program comes from the male, which programs come from the female, which behavior will program you in a particular way. So the question that I'm coming to is, when you said 0 to 6 is the age of the mother or the 0 sign, and 7 to 14 is the age for the son, for the father. Do we as me and my wife need to know who is it always as simple as gender? No. Is it the father and mother, or is it also, that's the part I was confused about. Saying is it as simple as 0 to 6 is? No, it's not. I said no, some program will be from your side as well, between 0 to 7. But most of the programming will happen through female. And after that, 7 to 14, most of the programming will happen through you, and some programming from the your wife. And not only you, and not only your wife. Your surrounding people, their teachers, all males or females. तो वो बाहर जाएंगे वो बच्चे, और जो भी देखेंगे, अच्छा लगा तो भी प्रोग्राम होंगे, बुरा लगा तो भी प्रोग्राम होंगे. बट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मेल फीमेल आप बात कर रहे हो, ये जेंडर वाले बात कर रहे हो कि लैंग्वेज वाली? जेंडर फीमेल, जेंडर. ओके, थैंक यू. जेंडर. ओके. Yes, Nazim, Naz, what is your question? Can you switch on your video? Okay, Vanshika, what is your question? Namaste, sir. Namaste. Sir, actually, does the way we hold the pen, like I hold it at this tip, but my parents insist like hold it over here. Does it do anything with our handwriting? It has significance, but we better go to the writing instead of the way we hold. What is more important is the way you write. It's like when Shiv Narayan Chandrapal is standing, or the Mahmood, how he is holding the bat doesn't matter as long as he is able to win the matches. So in that way, it has a significance, because if you hold in a proper way, you'll be able to write faster and better. But then we are more focused with the way we write instead of the way we hold. Okay. Yes, Najim ji, क्या question है आपका? Hello, good evening, sir. Sir, actually, I think मेरा मेरे क्वेश्चन भी शायद एडवांस लेवल के ही होंगे, बट माय क्वेश्चन इज लाइक एक तो वही डूडलिंग वाला हैबिट है मुझे भी, प्लस जो हैंडराइटिंग है वो मैं अकॉर्डिंग टू नीड काफी बार चेंज कर लेती हूँ. मतलब ऐसा नहीं कि हो जाती है, मतलब इंटेंशनली आई कैन चेंज माय हैंडराइटिंग. मतलब मैं बहुत ज्यादा उसको बहुत अच्छा भी नीट एंड क्लीन भी बना सकती हूँ, और जनरली मैं बहुत ज्यादा तो एनालिसिस मैंने आपको दिया है ना, दो लोगों का तो मैंने बोल ही दिया ऑलरेडी. व्हाट इज योर क्वेश्चन? अभी इस क्लास के लिए आई थिंक वो लेफ्ट एंड राइट वाला मैं सुन नहीं पाई, एंड जो आपने बताया बॉटम एंड टॉप. नाज जी, आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगा उसका, यू जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन. ओके, ओके, थैंक यू. यस, माधुरी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा, बोलिए. कैन यू अनम्यूट? Oh, you're not able to unmute? Yes. Can you hear me, please? Yes. Yeah. Hi, Sudhir. My question is that I had a habit of spoiling my own handwriting by listening to some of my friends saying that like जिसका handwriting अच्छा होता है उनका नसीब अच्छा नहीं होता है. I know that must be some stupid way of some friends trick, something like that. But I had a habit of coloring मतलब filling the gaps of D, B, G, जिनके the rounds होते हैं. So I had a habit of filling them while writing. And the second thing is कि I love writing with a pencil rather than the pen. I feel comfortable writing with a pencil. Pen से भी ज़्यादा.
I feel little discomfort and मेरा confidence थोड़ा सा कम हो जाता है when I do it. हाँ, तो मैं आपको रोकता हूँ। तो ऐसा है, you are the person who will like to live the life on your own terms. तो आपको ना अपनी लाइफ खुद के तरीके से जीने में मजा आता है। Okay. तो इसका I agree to that. I know you are rebellious in how to you are rebellious in nature। तो ये देखो, ये जो तरीका एनालिसिस का, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। तो ये जो तरीका है ना, तो ये तरीका भी हम सिखाते हैं। देखो, मैंने एक ही चीज को दो तरीके से बोला। पहली बार बोला तो शी सेड एग्री, उसका दूसरा मीनिंग ये निकलता है द पर्सन इज रिबेलियस, है ना। ऑब्वियसली द पर्सन हु वांट टू लिव द लाइफ इन हिज ओन टर्म्स, द पर्सन विल बी रिबेलियस, राइट। वो अपने तरीके से जीना चाहता है, इसलिए तो रिबेल कर रहा है। तो इनका जो उन्होंने बताया अब तक, उसमें से ये पता चलता है। तो ठीक है, ये पायल जी आपका क्वेश्चन है, पायल गुप्ता। हेलो सर, सेशन वाज वेरी नाइस, मतलब आई रियली लव इट और मुझे आगे भी बहुत मन है करने का। मेरे 2-3 क्वेश्चंस है। एक तो क्वेश्चन माधुरी जी वाला ही था कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ पेंसिल से लिखना, जो मेरा अभी आंसर कर दिया गया तो इसलिए मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी इस बात पर। और आपने बहुत सही बोला, मेरे नेचर से मैच भी करता है। और सर एक क्वेश्चन और था, मे बी एडवांस्ड लेवल का हो, कि सर राइटिंग से कोई इलनेस भी क्योर हो सकती है, कि वी कैन क्योर एनी इलनेस और एलिमेंट लाइक कैंसर समथिंग? अगर हो चुका है ऑलरेडी तो नहीं, लेकिन होने वाला है तो उसको रोक सकते हैं। राइटिंग से छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे एसिडिटी है, वो ठीक हो जाता है बहुत इजीली। लो बैक पेन, नी पेन, नेक पेन, अपर बैक पेन, सर दर्द, और कौन कौन से थ्रोट इश्यूज, ये सब चीजें आसानी से ठीक हो जाती है। कैंसर वैंसर अगर हो चुका है तो मुश्किल है, लेकिन राइटिंग से पता चल जाता है कि होने की संभावना है, तो उसको पहले से करोगे तो नहीं होता है। नहीं सर, रिलैप्स को हम लोग रोक सकते हैं क्या? रिलैप्स या रीअक्रेंस को अपने रोक सकते हैं क्या? हाँ, अगर एक बार ठीक हो गया तो वापस से वी कैन मेक श्योर दैट इट विल नॉट कम इन द लाइफ अगेन। तो डायबिटीज को भी हम लोग आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन हो चुका है तो कुछ फायदा नहीं, होने के पहले वी कैन डू द रेमेडीज दैट वी कैन। फॉर दैट आई कैन कांटेक्ट यू पर्सनली? नहीं, आप सीख लो, ये सिखाओगे तो ये सभी चीजें उसमें कोर्स में है ना। मतलब सभी, मतलब कुछ चीजें हैं जो, कुछ बीमारी जैसे स्टमक अपसेट के बारे में आप सीख पाओगे। नहीं सर, मेरे को रीअक्रेंस को सर रोकना है एक पेशेंट का, तो उसके लिए पर्सनली कांटेक्ट करूं कि सर इट विल बी, मतलब बहुत लेट हो जाएगा जब तक मैं सीखूंगी और उन पे अप्लाई करूंगी? तो आप ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, लेट अस हियर यू आउट, क्या है आपका। तो प्रियंका जी आपका क्या क्वेश्चन है? प्रियंका एम.के. सोनी। शिल्पा जी आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि अगर राइटिंग कोई पहले बहुत दूर लिखता हो और सडनली उसकी राइटिंग एकदम मिक्स्ड हो जाए, समझता है। आपका उतना ऑडिबल नहीं था क्वेश्चन, कैन यू रिपीट? हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि सडनली अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं पहले बहुत बड़ा लिखती थी और क्लियर लिखती थी, जैसे जैसे एज वो निकल रहा है तो अभी मेरा राइटिंग बहुत छोटा हो गया है और बहुत मिक्स्ड टाइप का हो गया है, तब भी वो राइटिंग ठीक है, इसका ये तो एडवांस लेवल है। आप जब एडवांस लेवल सीखोगे तो आप इसका एनालिसिस कर पाओगे। शिल्पा जी आपका क्या क्वेश्चन है? सर नमस्कार, आपका सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एक रेकी हीलर हूँ सर, और डिस्टेंस हीलिंग्स करती हूँ और सारी चीजें। तो मैं जानना चाहती हूँ सर कि क्या राइटिंग के थ्रू भी हम लोग इसके पेशेंट्स हो या मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको हम लोग मदद कर सकते हैं? जैसे काफी सारे पेशेंट्स हैं जो शायद लिख भी नहीं सकते हैं, तो हम लोग उनको किस तरीके से करते हैं? और काफी पेशेंट्स, मतलब काफी क्लाइंट्स हैं जो कि थंब इम्प्रेशंस है, जो साइन करना भी नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, दो तरीके से रेमेडीज करती है। हाउ वी यूज दी ग्राफोलॉजी रेमेडीज, तो दो तरीके से होती है। एक होता है बिहेवियर रेमेडीज और एक होता है राइटिंग का रेमेडी। तो राइटिंग में हमने आपको बताया कि फॉर्मेशन क्या करना है, और बिहेवियर में ये बताया कि व्यवहार क्या करना है। तो जो लोग लिख नहीं सकते उनको आप व्यवहार की रेमेडीज दे सकते हो, बिहेवियर रेमेडीज दे सकते हो, वो भी उतनी ही कारगर होती है। अच्छा, और एक चीज होती है सर कि कार्मिक, जैसे मिथुन जी ने भी बोला, आपने बोला था उनको, प्रकाश जी ने भी, तो कार्मिक भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग किस आगे जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं, मतलब राइटिंग में?
और क्या लिखना पड़ता है उनको, जैसे आप बोलते हो तो कि आप एडवांस लेवल पे सीखोगे शिल्पा जी। ये तो अभी हमारा जो 3 दिन का कोर्स है, उसमें जो चीज हमने प्रॉमिस किया हम आपको सिखाएंगे, है ना। ये है, ये है, ये है, ये है, तो वो सभी चीज, जैसे कलम सीखेंगे कि कौन से वो लोग हैं जो भीड़ में अकेले हो जाते हैं, कौन से लोग हैं जो मतलब घर से दूर जाके अच्छा काम करते हैं, कौन से लोग घर से भाग जाएंगे, कौन से लोग लव मैरिज करेंगे, कौन से अरेंज मैरिज करेंगे, तो सब हम तो ऐसे ही जब आप डेप्थ में जाके सीखोगे तब आप रेमेडीज सीख पाओगे। 3 दिन के अंदर तो मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा रेमेडीज। जब एंड तो आप रेमेडीज सीखोगे। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। धर्मेश जी, आपका क्या क्वेश्चन है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर सेशन है ये। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो वेरी बेसिक रिलेटेड टू दिस क्लास ओनली। आपने स्टार्टिंग में बोला कि आपको एक प्लेन पेपर लेना है, उस पे लिखना है, सो व्हाई नॉट अ रूल्ड लाइन पेपर एंड अ प्लेन पेपर? अच्छा, ओके। आगे जाके ना आप किसी ने एक डॉट दिया ना गलती से, एक डॉट, तो उस डॉट में से आप 10 चीजें बता पाओगे। ओके, उसको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, एक लेटर, एक डॉट। पर आज आप उसके लिए रेडी नहीं हो, तो आज वो स्टेप बनाइए पहले प्लेन पेपर पे। फेयर इनफ, ठीक है। और दूसरा सर, कैन वी यूज दिस ग्राफोलॉजी साइंस फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट आल्सो? यस। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेशंस, थैंक यू। यस, Realme 3 Pro। आपका नाम नहीं है? हाँ पता नहीं सर, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है। 2 क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन तो थोड़ा हाफ आंसर हो गया है कि व्हेन राइटिंग कॉपिंग और डिक्टेटिंग चल रही है तो हम फास्ट लिख रहे हैं, तो माय राइटिंग इज वेरी क्लियर ऑलवेज, बट इट बिकम्स वेरी स्मॉलर इन साइज, सो आई एडवांस लेवल तो है ना आप। दैट इज ओके ओके। एंड अभी जस्ट नाउ यू टोल्ड दैट टू ड्रॉ। जैसे हमने जो चीजें सिखाई उससे रिलेटेड कुछ भी पूछोगे तो इट्स इजी फॉर मी टू आंसर। एडवांस लेवल के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। हमारा जो कोर्स है वो हमारे पास 250 घंटे का कंटेंट है। अब 250 में से आप हमारे से अभी 3 घंटे या 3.5 घंटे या 4 घंटे सीखोगे, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा, बोल ही नहीं पाऊंगा, है ना। ओके ओके सर। और जस्ट नाउ यू टोल्ड कि हमें ड्रॉ करना है मुझे एक पेज में ना, तो दैट ड्राइंग इज ओनली विद अ पेन और इट्स ओनली विद कलर्स? योर विश, जैसा भी करना चाहो कर सकते, फ्रीडम इज गिवन टू यू। ओके। नरीज, आपका क्वेश्चन हुआ है? योर हैंड इज स्टिल रेज्ड। डन, ग्रेट ग्रेट। यस, सीमा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? Namaste Sudhir ji, I am a practicing lawyer. I joined this course thinking I will understand the handwritings because I am basically more of a criminal lawyer. I conduct more than 200 criminal cases a day. So I thought something, and I came to know it's something different only. So it's a nice thing that, it's very in depth, and I'm more into spirituality than being more religious. My question, sir, is personal, where my handwriting has not changed from my school days, from my 8th standard. I am going to be 50 years old, but my experiences have changed me a lot. So there is a conflict between my handwriting and the analyzing of what I am today. This is one question, sir. No, it will not happen. Yes, so sir. I will answer this first. So you might feel that your handwriting is not changed, but yes, so it's like when you look at the blood sample today and the blood sample after 5 days, you feel, oh, blood is red, it's the same. But when you put that blood into the laboratory, the analysis will be different. So similarly, when I look at the handwriting, I will come to know about some different facts. I will say, okay, you have changed a lot. For you, it might be the same. For us, it's different. Sir. And second question, sir, I wanted to know what are the courses that are there, sir, and what's the time? Okay. Because this time is my client time, 7 to 9:30. So, I come from High Court by 6:30. 7 is my office time. So 3 days I have told no clients to my juniors. So I wanted to know, sir, ki kitna. So generally we teach. So this our teaching happens between night 9 to 11 is the time on the Saturday, only on Saturday. Okay. And then during the week we have mentors which support you. Mentors also take small class of 1 hour, which happens from morning till evening, Monday to Friday. So you can attend the mentoring class, you can attend our class as well. And then you have a recording of 250 hours, approximately 250 hours recording, on demand recording is there, which you can watch and you can learn, out of which 100 hours is given to the practical, the 100 hours of theory,
the way we are learning right now, and remaining is the practical, how to tell, how to analyze, how to look into the details in that way. So it has two, three portions, multiple ways of learning. Then we have WhatsApp group, we have a Facebook group where you can put your sample, you can analyze, other people also can comment and discuss and all. So multiple ways of learning. Yes. So this course will be basic course, advanced course of more than 3 months. So this is what you are learning is it's a master class. It's like you will come to know various things, how graphology works, what is the importance, how you can analyze certain and few handwritings. Those things you will come to know. And the advanced level course will make you a master. You will be a professional person. So that will be 4 months course, sir. It's a lifelong course. It's like we are giving you recording. Time kitna lagega, sir? So the minimum investment is of 50 hours. 50 घंटे भी अगर recording देख लेते हो, तो you will come to know about all the things. One more, I missed out on that कि क्या लिखना चाहिए and what has to be drawn. वो Okay, थोड़ा I will वापस से ना वो WhatsApp पे आ जाएगा. It will come to the WhatsApp. ठीक है. Thank you so much. Namaste. Pranam. Yes, Veena ji, आपका question? Sir, when I write, no, I'm comfortable in English. I'm from Karnataka. Okay. When I'm actually a basically teacher. When we are having a meeting, no, our mentor will tell us to write something. Okay. When I'm writing, no, I forget spellings. It will be there in my mind. When I'm writing, no, I'll miss 1 or 2 words in a line. You think I miss few words there. Few letters I'll miss and I'll write. Then when I recheck, no, I come to know that I've missed that letter. I don't know why it is happening. And I think from last 2 years only this is happening. Before that, it was fine. Okay, so what it tells me is it's like you will have, right now you are in a position wherein you are not giving enough importance to the emotions. Okay. So emotional quotient is a kind of disturbed right now. So it means this, you want to work on it and you are trying to improve yourself emotionally. Okay. Yes or no? Yes. So it means this. So logic तो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा अभी तो ठीक है. अभी लास्ट 2 questions आदेश जी का और वैशाली जी का. यस वैशाली जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपने बोला था ना हैंडराइटिंग इज कार्मिक साइंस, मतलब आर यू सेइंग कि पास्ट लाइव्स का कनेक्शन? नहीं, कार्मिक मतलब कर्म से जुड़ा हुआ साइंस. कार्मिक मतलब कर्म से जुड़ा हुआ. इस साइंस में आप अपने कर्म्स को बेहतर कर सकते हो, अपने कर्मों को समझ सकते हो कि मेरा कर्म का लेवल क्या है, मेरा कर्म किस तरह से होता है, मन की लेवल पे मेरे कर्मा क्या है, फिजिकल लेवल पे मेरे कर्मा क्या है, और वो सब आप उसको समझ पाते हो और उसको मॉडिफाई कर पाते हो. तो मतलब माइंड बॉडी लेवल सोल लेवल पे तीनों लेवल पे सेग्रीगेट कर सकते हैं. यस. दूसरा आपने पास्ट लाइफ की बात की. हाँ. तो हमारा एक एडवांस कोर्स भी है इस ग्रैंड मास्टर को इसी कोर्स को लेके, जहाँ पे वी डोंट टॉक अबाउट राइटिंग, वी टॉक अबाउट मेनी मोर थिंग्स अदर देन राइटिंग एज वेल. एंड राइटिंग के ऊपर और डेप्थ में, तो उसमें कार्मिक लेवल पे भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीजें होती है, इसकी वजह से राइटिंग ऐसा आपको मिलता है. क्योंकि राइटिंग आपको ऐसा क्यों मिला है, क्योंकि आपके सराउंडिंग से वो आप इन्फ्लुएंस होकर आपको राइटिंग मिल रहा है. आपका सराउंडिंग जो है वो पास्ट लाइफ से आपको मिलता है. तो यस, इट कैन आल्सो बी. ओके सर. एंड आपने जैसे ऑलरेडी बोला है कि अगर शादी करना है देन वी कैन एनालाइज फॉर मैनिफेस्टिंग पार्टनर. बट सर कभी कभी की लाइफ पे जैसे पैटर्न्स रिपीट होता है, मे बी योर रिलेशनशिप इज नॉट एंडिंग इनटू अ मैरिज लाइक इन द पास्ट, तो वो भी हम आउटडू कर सकते हैं. एंड फॉर माय सेल्फ आई एम आस्किंग लाइक दैट. तो हम लोग आसानी से ये पता कर सकते हैं डिवोर्स किसका होगा, क्यों होगा, उसके रीजंस क्या होंगे, वो एडवांस में बता सकते हैं. लेकिन वो एडवांस इसका भी एडवांस है, मतलब वो ग्रैंड मास्टर का पार्ट है जहाँ पे डिवोर्सेस की बात होती है, गैनक इश्यूज की बात होती है. वो बहुत ही एडवांस हो गया. बट यस, बेसिक लेवल पे जो आप सीखने वाले हो, एक्सपर्ट बनने वाले हो, उस लेवल पे तो वी कैन कम टू नो अबाउट अलाइनमेंट होगा कि नहीं, ब्रेकअप होगा. आई कैन ट्राई टू मेक माय लाइफ बेटर थ्रू दिस एंड डेफिनेटली गुड पर्सन. 100. वही था सर, क्योंकि मैं आईटी इंजीनियर हूँ, अभी मैंने टैरो रीडिंग्स चालू किया, न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, तो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा ग्राफोलॉजी, तो इट विल हेल्प मी अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स. एंड आप बताएंगे हाउ टू लाइक व्हाट वन कैन चार्ज और इनिशियली जनरली उस लेवल पे सिखाते हैं कि आप इसको यूज कर पाओगे, उसको रिजल्ट दे पाओगे, आप खुद की लाइफ भी बदलोगे, दूसरों की लाइफ भी बदलोगे, इसको रेमेडियल साइंस करके यूज कर पाओगे. इट्स उस लेवल पे सिखाते हैं. मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं.
1 लाख रुपीज, 4.5 लाख रुपीज, ऐसे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है कि उन्होंने उतना कमाना चालू किया है। हर रोज हमको नए नए टेस्टिमोनियल्स मिलते रहते हैं कि पीपल हैव स्टार्टेड अर्निंग, एंड वी मेक श्योर दैट ऑल द पीपल हु आर अर्निंग थ्रू ग्राफोलॉजी, we celebrate their earnings, we celebrate their contribution to the society by honoring them in our Facebook, in our WhatsApp, in our YouTube, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको बहुत पॉपुलर करें, क्योंकि इसने मेरी लाइफ चेंज की और बहुत पावरफुल साइंस है, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं जितना न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी है। तो मैं चाहता हूँ कि उतना पॉपुलर हो, इसलिए हम बहुत सस्ते में सिखा रहे हैं, 250 घंटे का कंटेंट दे रहे हैं आपको और बहुत कम चार्ज करने वाले। तो सर मेरे को इसलिए सीखना है एज एन एड ऑन फॉर क्लाइंट्स। एक लास्ट चीज, बहुत स्मॉल चीज है सर, आपने बोला था 0 to 7 फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है बच्चा, सो बट अगर ज्यादातर, सो बट अगर सर सपोज योर मदर इज ओनली हैविंग सम मैस्कुलिन लाइक क्वालिटीज, तो फिर क्या कुछ मामला गड़बड़ नहीं? किसी किसी के फादर कुड बी मोर ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक ना। तो मैंने क्या कहा कि ज्यादातर 0 से होगा, मतलब मदर से होगा, और कुछ प्रोग्रामिंग 1 से भी होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, और मदर और मस्कुलिन तो ठीक है, इट्स नॉट एन इशू। ओके, तो उसी हिसाब से ट्रेट्स आएंगे, मतलब जैसा मम्मी का कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे इट नहीं, डीड नॉट डिपेंड ऑन जेंडर। इट्स नॉट अबाउट वेदर मदर इज मस्कुलिन और फेमिनाइन, इट्स अबाउट हाउ द पर्सन who is getting programmed is having a perception, तो वो क्या नजर से देख रहा है वो उसके अंदर जाएगा। तो हो सकता है आप किसी के डैड बहुत अच्छे हैं, बहुत डैशिंग है, ये है वो है वो है, लेकिन वो घर पे नहीं आते, तो बच्चे ने देखा ही नहीं डैड को, तो उसका प्रोग्रामिंग डैशिंग का नहीं होता। तो बच्चा क्या परसीव कर रहा है, परसेप्शन ऑफ द किड इज इंपॉर्टेंट, नॉट आवर परसेप्शन। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। यस आदि जी, लास्ट क्वेश्चन, कस्तूरी जी का भी लेना। यस सर, जस्ट you namaskar Paragita, you told us the timings of your classes, okay, but just want to know how can we join those classes and the fees for the tomorrow after the lecture I will explain how can you enroll into the full class, how can you become a part of this community, how can you improve your life, so वो सब मैं कल आपको क्लास के बाद बता देता हूँ, ठीक है? Okay, the fee structure as well, everything I will tell you tomorrow, कल बताऊंगा। अभी okay तो sir, thank you, yeah, thank you। कसू जी, आपका क्या क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन? Yes, thank you so much. I had actually lost interest in midway through, but somewhere when you said कि we can cure our acidity and all, I thought कि okay, ये कुछ काम का चीज है। तो will that be told within the class, or I have to do some advanced course for that? That is advanced level knowledge. This whatever you are going to learn in this is already been shared with you on the during the ads and everywhere. We are committed, and whatever you are committed, we are going to teach you more than that. Okay. But acidity, other things you will have to do advanced level course. Okay, that will be later on. Okay. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स मीट टुमारो शार्प एट 7। तो कल जल्दी आइएगा 7 बजे शार्प, या फिर उसके पहले भी ज्वाइन कीजिएगा। हमारे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हम चलाते हैं क्लास के पहले, तो वो वीडियोस आपको देखने का मौका मिलेगा। थैंक यू एंड गुड बाय।